Hello everyone, welcome to the fifth lecture of motion in straight line. Today we'll discuss the MCQ questions of kinematic equations for uniformly accelerated motion. Okay. So we'll discuss topic of uniformly accelerated motion. So here in this case, the first question is: a body starts from rest and moves with constant acceleration for t seconds. It travels a distance x1 in first half time and x2 in next half time. Then which of the following relation is correct? So suppose for example we'll consider the motion from A to B. We'll consider the motion from A to B, and in order to move from A to B, it travels, let us assume it travels a distance of x in time t having acceleration A. क्लियर? पूरा का पूरा ये जो मोशन है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x डिस्टेंस t टाइम में, और उसमें एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रह रहा है a. क्लियर? एंड नेक्स्ट व्हाट इट इज सेइंग, इट ट्रैवल्स डिस्टेंस x1 इन फर्स्ट हाफ टाइम, पहला हाफ टाइम. अब मान लो कि इसमें मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, आधा आधा टाइम में के हिसाब से मोशन को डिफाइन किया जा रहा है. तो पहला हाफ टाइम मान लो कि p पॉइंट तक पहुंच गया. दैट मीन्स इट ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ x1 इन टाइम t/2 हैविंग एक्सेलरेशन a. क्लियर? a से p तक का जो मोशन है हम उसको इन पैरामीटर से डिफाइन करें. सिमिलरली इन द नेक्स्ट हाफ टाइम इट मूव्स फ्रॉम p टू b. नेक्स्ट हाफ टाइम मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x2 इन नेक्स्ट हाफ टाइम t/2 एंड हैविंग एक्सेलरेशन a. पूरा का पूरा मोशन में हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है. क्लियर? तो motion wise, so we have defined these parameters. So let me write it once again. This is a, this is p, and this is b. Clear? Okay, so fine. So starting, so motion from a to b. तो पूरा का पूरा जो मोशन है उसको अगर हम पहले डिफाइन करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, x डिस्टेंस कवर कर रहा है, और टाइम कितना लग रहा है t, और एक्सेलरेशन कितना है a. तो उस हिसाब से हम अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, तो x विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्लियर? अच्छा, इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. तो इसमें बोला गया है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स u शुड बी 0. क्लियर? सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर टर्म बिकम्स 0. सो फाइनली x बिकम्स हाफ a t स्क्वायर. so x can be written as a t square by 2. क्लियर? सो x का वैल्यू हमें कितना मिला, a t square by 2. नेक्स्ट, सिमिलरली if we will define motion from let we define motion from a to p तक का जो मोशन है उसको हम अभी डिफाइन करेंगे. तो उसमें हमारा डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है x1, और टाइम उसको लग रहा है मान लो कि t1 जो कि t/2 है, और एक्सेलरेशन मान लो कि a1 जो कि a रहेगा यहाँ पे. तो डिस्प्लेसमेंट x1 का इक्वेशन क्या होगा, u1 इंटू टी प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर, और इसमें u1 कितना होगा भाई, u1 मतलब वही u होगा, u1 शुड बी इक्वल टू 0. क्लियर? क्योंकि ऐसे ही शुरू हो रहा है. तो दैट मीन्स हियर इन दिस पर्टिकुलर केस दिस पर्टिकुलर टर्म बिकम्स 0. सो फाइनली व्हाट यू कैन राइट, हाफ a1 इक्वल टू a, एंड t1 इज नथिंग बट t/2 का होल स्क्वायर, एंड दैट विल बिकम हाफ a t square upon 4. So that means the value of x1 will be how much, a t square upon 8. x1 का वैल्यू कितना आ रहा है, a t square upon 8. okay, so finally what we'll be doing, we'll be defining okay, so here in this particular case we got the value of x का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला, और x1 का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x2. तो x2 का वैल्यू कितना होगा, जो कि मोशन फ्रॉम p टू b के अंडर में आ रहा है. क्लियर?
So we can say as it is a straight line motion or motion in straight line, that means what we can write, x total distance covered will be equal to sum of the individual distance x0 x1 plus x2. That implies the value of x2 will be how much? X2 will be equal to x minus x1. Clear? So x is how much? A t square by 2 minus x1 is a t square upon 8. So we can take a t square common, so it will be 1 by 2 minus 1 by 8. So the value of x2 will be how much? A t square LCM 8, so it will be 4 minus 1, so it will be 3 a t square upon 8. Clear? But what is a t square upon 8? We know that a t square upon 8 is nothing but x1. So that implies what you can get, x2 will be equal to 3 times x1. Clear? So finally you can check the option. So option A is x2 equal to the 3 of x1. So this is the correct. Rest others will not be correct. Rest others are wrong. Okay, moving to next question. Question number 52 of MTG. Here in this particular case, what is saying, free fall of an object in vacuum is a case of motion with free fall motion. Free fall motion, that means suppose this is the ground and a ball is present over here, and we are saying free fall motion means initial velocity should be 0 and acceleration should be taken as minus g, which is vertically downward. So this is constant. Clear? That means a is remaining constant in the downward direction. That means acceleration should be constant. यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं होगा, एंड यूनिफॉर्म स्पीड भी यहाँ पे नहीं होगा. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द करेक्ट. Moving to question number 53. Here, which of the following equations does not represent the kinematic इक्वेशंस ऑफ मोशन? तो काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम लोग को मालूम है, देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s. सो विल चेक वन बाय वन, एंड अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. nth second will be equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. Okay, so first equation, what is saying, v equal to u plus at, this is correct. s equal to ut plus half square, this is also correct, and s is equal to vt plus half square. This seems to be correct. So first of all, we will define the parameters in the equations of motion. Here u is nothing but initial velocity, v is indicated to be final velocity, a is acceleration, and t is the time interval. T is what? T is the time interval. So here in this particular case, by taking these 4 parameters, we define the equations of motion. Clear? So here in third option, what is saying, s equal to vt plus half square, final velocity into time, and actually it should be initial velocity into time. So dimensionally this equation may be correct, but logically, according to the conditions, or according to the what you can say, according to the principle wise, this is not correct. So it should be ut, it should be what, ut plus half square. So this is wrong. And final one is final velocity square minus initial velocity square is equal to 2as. So this is also correct. So not correct, does not depend the kinetic equations. So option C. Moving to the question number 54, this is very very important. Which of the following statement is not correct? Once again, statement type question. The zero velocity of a body at any instant does not necessarily imply zero acceleration at that instant. Okay, जीरो, इसका मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वेलोसिटी जीरो, अगर मान लो कि वेलोसिटी कहीं पे जीरो है, क्लियर, देन किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि किसी भी टी टाइम पर मान लो कि अगर वेलोसिटी कहीं पे जीरो मिल रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन भी वहाँ पे जीरो होगा. तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है. क्लियर? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे. विल टेक द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है,
Suppose if we'll project an object with some initial speed, then what will happen, it will move upward and after that it will take u-turn, और u-turn लेने के बाद वो फिर से नीचे आएगा. Clear? So here in this particular case, at the highest point, that means when the object reaches the highest point h, its final velocity becomes 0, but throughout the motion acceleration is what, negative of g, which is vertically downward. Clear? वो नीचे की तरफ है. Clear? तो इस so that means what, this first statement is correct. Second one, the kinematic equation of motion are true only for motion in which magnitude and the direction of acceleration are constants during the course of motion. Kinematic equation motion are true only for those motions in which magnitude and the direction of acceleration. एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन पार्ट, ये दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए एक काइनेटिक, जहाँ पे हम मतलब उसी मोशन में जहाँ पे हम काइनेटिक इक्वेशंस को हम अप्लाई करेंगे. तो ये ऑब्वियसली सही है, क्योंकि अगर आप इस मोशन अंडर ग्रेविटी का केस ले लो या फिर वर्टिकल जो आपका फ्री फॉल मोशन आप ले लो, कोई भी केस आप ले सकते हो, तो उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है. क्लियर? और उसका डायरेक्शन भी यहाँ पे कांस्टेंट है. क्लियर? तो उन केसेस में ही हम काइनेमेटिक इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. Okay, moving to the third case, the sign of acceleration tells us whether the particle speed is increasing or decreasing. Sign of acceleration तो उसका मतलब है, मान लो कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव है, इफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव तो उसका मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. क्लियर? इफ एक्सीलरेशन इज नेगेटिव दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग. क्लियर? तो क्या ये हमेशा सही होगा? Clear? Let us take some example. That here in this particular case, suppose if we will take the case of an object or a car. Assume that there is a car which is moving with some positive speed. Clear? यहाँ पे उसका स्पीड क्या है, पॉजिटिव स्पीड है. बट एंड सिमिलरली सपोज एज्यूम दैट एक्सीलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव. क्लियर? तो क्या होगा, ग्रेजुअली इट्स स्पीड विल इंक्रीज. तो फाइनली क्या होगा, इट्स स्पीड विल इंक्रीज. क्लियर? बिकॉज पॉजिटिव एक्सीलरेशन दैट मीन्स इट्स स्पीड यहाँ पे क्या होगा, जनरली इंक्रीज होगा. सिमिलरली सपोज इफ वी टेक द सेम कार which is initially moving with positive speed or moving with some positive velocity. पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब क्या है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करा है. क्लियर? पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन. एंड एक्सीलरेशन हियर इफ विल टेक नेगेटिव देन व्हाट विल हैपन. क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में देन ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, ग्रेजुअली इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज. क्लियर? इसका वेलोसिटी क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज होगा. क्लियर? तो ये वाला चीज़ को हमें ध्यान में रखना है. क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ पे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी हम ले सकते हैं मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन मान लो कि नेगेटिव है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो उसका 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा. दैट मीन्स इट्स व्हाट दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज सेइंग दैट वेलोसिटी विल डिक्रीज एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? मतलब हर 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी में कितना डिक्रीज आएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड का डिक्रीज आएगा. दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड के बाद कितना होगा, 18 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद कितना होगा, 16 मीटर पर सेकेंड. ऐसे ही उसका वेलोसिटी फाइनली क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्लियर? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन when it is present with positive velocity, then velocity actually gradually decreases. Similarly, if we take the case, for example, if we take the case over here, that velocity here, let me change it. If we take the case, for example, suppose the car is moving, initially it is moving with negative velocity. Clear?
here is moving with negative velocity and acceleration is also negative. Acceleration भी यहाँ पे क्या है, negative है. Then in that particular case what will happen? In that particular case obviously its velocity क्या होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी को यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो डिक्रीज होगा, तो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड वाइज दैट वैल्यू विल इंक्रीज, बट जब साइन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, डायरेक्शन पार्ट वेलोसिटी में. यहाँ पे आप इसको मैथमेटिक्स की तरह मत समझो. अगर मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 20, वही यही एग्जांपल लेंगे, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी उसका 20 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या है, हर एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी से क्या करना है, हमें 2 मीटर पर सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस वाले पर्टिकुलर केस में आपको क्या मिलेगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट मीन्स इनिशियली -20 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी, v इज इक्वल टू u प्लस 80 -20 प्लस -2 इंटू 1 सेकेंड, दैट मीन्स हाउ मच विल बी गेटिंग -22 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद कितना होगा, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी हाउ मच, -24 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन, दैट मीन्स द कार इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, बट विथ दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो मतलब नेगेटिव वेलोसिटी के साथ अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन रहता है तो उस केस में उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में. क्लियर? एंड सिमिलरली इफ द कार इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, कार अगर मान लो कि नेगेटिव वेलोसिटी के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव लेंगे, तो ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. नेगेटिव डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फाइनली एक टाइम आएगा वो क्या होगा, ऐसे जाएगा, यू टर्न लेके वो ऐसे मूव करेगा. क्लियर? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. तो यहाँ पे ए साइन ऑफ एक्सेलरेशन जो बोला गया है, इट टेल्स वेदर द पार्टिकल स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, नॉट ऑलवेज ट्रू. Okay, in question number this 55, the distance covered by a freely falling body in its first, second, third, nth second of its motion forms what kind of progression? Okay, fine. Here it is. Arithmetic progression, geometric progression do not form any well-defined series. Forms a series corresponding to the difference of square root of successive natural numbers. Okay, so here in this particular case, we'll try to write down the distance covered by the freely falling body in its first, second, and third, and so on, continue to nth second of motion. So first, freely falling body. So assume that this is ground, and this particular object which is falling freely, having initial velocity 0, and its acceleration due to gravity, which is taken as g, which is in the vertically downward direction. So displacement in the first second will be how much, u plus, okay, displacement in nth second, the formula for displacement in nth second is nth. What will be its formula? Displacement in nth second can be written as Sn equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. This is the formula that will be used over here. So here in this particular case, u plus a by 2, a is nothing but what you can write, we can free falling motion, that means here we can take the reference to be or the origin to be present over here. Here origin only vertically downward direction, that means reference point will take over here. Here will not consider the ground as to be origin. In case if we take ground as the origin, then in that particular case g will be taken as negative. So if we take this one as the reference point, then here in this particular case g will be considered as positive. So u plus g by 2 into 2n minus 1, so 2 into 1 minus 1.
So that value will be u over here is 0, initial velocity 0, so it will be g by 2 into 2 minus 1, that is 1, so it will be simply g by 2. So displacement s first is coming to be g upon 2. Okay, similarly displacement in displacement in second will be how much? U plus g by 2 into 2 minus 1, so that value will be how much? So u is once again 0, so it will be g by 2, 4 minus 1, so 4 minus 1, that is 3. So that means displacement in second will be how much? 3 g by 2 here. And displacement in third second will be what? U plus g by 2, 2 into 3 minus 1. Clear? So that value will be u is 0 over here, so g by 2 into 6 minus 1, that is 5. So it will be displacement in third second will be how much? 5 g by 2. Clear? So here in this particular case, if we just look at the series, so displacement in nth second में कितना होगा? nth second. So similarly, so on, if we continue, displacement in nth second will be u plus g by 2 into 2n minus 1. Clear? U is 0, so that implies s nth will be g. Okay, it will be how much? It will be 2n minus 1. It will be 2n minus 1 into g by 2. So if we'll write the series right now, series अगर हम शुरू करेंगे, so it will be g by 2, 3g by 2, then 5g by 2, and so on continue till 2n minus 1 into g by 2. Okay, so this is the first term. ये यहाँ पे क्या है? This is first term, and this is the last term, and these are consecutive terms. Clear? So then first term here we'll write this is g by 2, एंड कॉमन डिफरेंस अगर हम एपी के फॉर्मेट में इसको देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए. सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा? अब कॉमन डिफरेंस कैन बी रिटन एज it will be 3g by 2 minus g by 2, so it will be 2g by 2, 2 got cancelled, so common difference is coming to be g. और else common difference हम चेक करते हैं 5g by 2 minus 3g by 2, so once again 2g by 2, so that will be g. Clear? So common difference d is coming to be what? G. सो इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एपी. ये कौन सा फॉर्मेट में है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर? अच्छा, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में होगा क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में कॉमन रेशियो आना चाहिए. फर्स्ट टर्म है जी बाई 2, और कॉमन रेशियो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 3, और इन दोनों का रेशियो ये 3:1 के फॉर्मेट में, तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 5:3, तो कॉमन रेशियो नहीं आ रहा है. क्लियर? तो इसलिए ये जीपी में नहीं होगा. क्लियर? डू नॉट फाइंड, तो ये तो नहीं हो रहा है, एपी आ रहा है, तो बाकी और कोई नहीं होगा. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. Okay, here in this particular case, in question number 56, what it's saying, a body covers 20 meter, 22 meter, 24 meter in 8th, 9th and 10th second respectively. The body starts. Okay, what is saying, these are the distance, or you can say these are the displacement in 8th, 9th and 10th second. Clear? So displacement, that means what it has given, s8th will be equal to 20 meter, and that can be written as u plus a by 2 into 2n minus 1. So 2 into n should be 8 minus 1. Clear?
So that equation will be how much? 20 equal to u plus a by 2. 2 is 16 minus 1, that's so 15a by 2. Clear? So that means what we can write over here. So u plus 15a by 2 equal to 20. This is one. Similarly, displacement in s ninth will be how much? S ninth is, that is given as 22 meter, and that will be nothing but u plus a by 2 into 2 into 9 minus 1. Clear? And that value will be how much? So 22 equal to u plus 2 into 9, 2 9s are 18 minus 1, so that is 17. So 17a by 2. Clear? This is second. Similarly, if we'll write the third case, so s10th value is given as 24. Clear? So that 24 can be written as u plus a by 2 into 2 into 10 minus 1. So that value will be written as 24 equal to u plus a by 2. This is 20 minus 1, so 19. So it will be how much? It will be 19a by 2. 19a by 2. Clear? Okay, this is third. Okay, so here in this particular case, what they are saying, these are the case. A body cover, this is this much displacement in this particular seconds respectively. The body starts. Okay, here in this particular case, the body starts from rest and moves with initial velocity. Okay, we'll check. So let us try to find out the values of u and a. After that, we can get the final result. Clear? Okay, so here in this particular case, what we'll be doing, we'll be taking any two equations. कोई भी दो equation हम ले लेंगे यहाँ पे. क्लियर? तो मान लो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेट अस, और यू कैन टेक द डिफरेंस ऑफ एनी टू इक्वेशंस. सपोज subtracting what 1 from 2. Okay, if you subtract 1 from 2, then in that particular case, so what we'll be getting, so u plus 17a by 2 minus u minus 15a by 2 equal to 22 minus 20, that is 2. Clear? So u got cancelled. So 17 minus 15, that is 2. A by 2 equal to 2. So that implies a is coming to be 2 meter per second square. So acceleration यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 meter per second square. And if we put that value in any one, so from 1, so that what you can write, so u plus 15 a by 2, a is 2 divided by 2, here equal to 20. So 2 got cancelled, so u plus 15 equal to 20, so u will be equal to 5 meter per second. That means here in this particular case, the body is having some initial velocity and having some acceleration. Okay, and that acceleration is constant. So from rest, that means this statement is wrong. From rest, this statement is wrong. With an having initial velocity and moving with uniform acceleration, this is correct. And with an initial velocity and moves with the uniform velocity, initial velocity, that is correct, but uniform velocity, that is wrong. So that means this is wrong. Clear? So option C will be the correct. Next, moving to question number 57. This is a statement type questions. A player throws a ball vertically upwards with velocity u at highest point. So a ball is there. This is the ground, which is taken as the reference point, and the ball is thrown vertically upward with velocity u. Highest point, at the highest point. जब highest point तक पहुंच जाएगा, clear? Then what information we can get from there?
So the both, that means at the highest point this ball will move like this, and it will take a U-turn and it will come to the ground. Clear? That means at the highest point its final velocity, its velocity will be 0. Not final, at the highest point the velocity will be 0. Clear? Both velocity and at the highest point acceleration is negative g, vertically downward. Both velocity and acceleration of the ball are 0. Wrong. Velocity of the ball is u and its acceleration is 0. Wrong. Acceleration cannot be 0. The velocity of the ball is 0 but its acceleration is g. Correct? Velocity of the ball is u but its acceleration is g. Velocity of the ball at the starting point, when we throw the ball, when we project the ball, at that point velocity will be u. Clear? U is the initial velocity. That means at the highest point you cannot take the initial velocity. That means it is wrong. So option C is the correct. Moving to question 48. A car 58. A car moving along a straight road with speed 144 km per hour is brought to stop within a distance of 200 meter. Clear? How long does it take for the car to stop? So कितना, how long does it take means, that means how much time will it take, कितना समय इसको लगेगा. Clear? So here in this particular case, car initially it's moving with 144 km per hour. That means its initial speed is given 144 km per hour, and other informations are given in SI. So that means we will hit to convert that one, 144 into 5 upon 18. So 18, 8 is the 144, so 40 meter per second. So initial velocity u is coming to be 40 meter per second. Clear? It is brought to stop. That means its final velocity will be 0. And within how much distance? In 200 meter distance. Okay, so here in this particular case, how long does it take? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? Time. Clear? So I think in order to find out the time, we can use two equations, either b equal to u plus at or s equal to u plus half at square. Clear? And here in this particular case, we are not given the acceleration. So first of all, we'll try to find out the acceleration. So how can we find out the acceleration? We'll use the equation v square minus u square equal to 2as. Clear? ये वाला equation हम यहाँ पे use करेंगे. Clear? So here in this particular case, final velocity is 0. That means 0 minus u is 40. So 40 square equal to 2 into a into 200. So the value of a is coming to be, so 40 square is 1600 divided by, this is 400. Here, so this will be 4. This is negative. So minus 4 meter per second square. So acceleration is coming to be how much? Minus 4 meter per second square. Clear? Okay, if acceleration is coming to be minus 4 meter per second square, right now we can find out the time. So in order to find out the time, we can use the equation v equal to u plus at. So final velocity is 0, initial velocity is 40, plus acceleration is minus 4 into time. Clear? So here in this particular case, what we'll be getting, so the value, that means 4t equal to 40. That means t is equal to 40 upon 4, that is 10. So time will be 10 seconds. So within 10 seconds it will come to stop. Okay, so here in question number 59, here in question number 59, what is saying that an auto traveling along a straight road increases its speed from 30 meter per second. So okay, initial velocity or initial speed is given 30 meter per second. Clear? To final speed that is given 50 meter per second. Okay, in a distance, so distance traveled is 180 meter. Okay, if the acceleration is constant, a is said to be constant. a यहाँ पे क्या है? Constant है. How much time lapse while the auto moves this distance? Clear? Time, it is asking about the time. Time यहाँ पे पूछा जा रहा है. Clear? So it is just like the previous question. So here in this particular case, what we will be doing,
we'll be finding out the acceleration first. After that we'll find out the time. So in order to find out the acceleration, we'll be using the equation v square minus u square equal to 2as. v is 50 square minus u is 30 square equal to 2 into a into s. What is s? 180. Clear? So here 50 square is 2500 minus 900 is equal to 360a. Then what is the value of a? So 360a is coming to be 2500 minus 900. So 2500 minus 500 to 2000, 2000 minus 4, so 1600. So it is coming to be 1600. So a will be equal to 1600 divided by 360. So 0 0 got cancelled. So how much will be getting? Directly ये कट हो रहा है नहीं. So how much it is coming? 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और नहीं कट होगा. So 40/9 meter per second square. Acceleration is coming to be 40/9 meter per second square. Now we'll find out the value of time. Okay, so in order to find out the value of time, once again what we'll be doing, we'll be using the equation v equal to u plus a into t. V is 50, initial is 30 plus a is 40/9 into t. Clear? So finally here in this particular case 40/9 into t equal to 20. So that means the value of t will be equal to 20 into 9/40. So 0 0. So here 2. So 9/2, that is 4.5 second. So it is option B is the correct, 4.5 second. So within 4.5 second, this auto will increase its speed from 30 to 50 meter per second. Okay, in question number 60, a body falling freely under gravity passes 2 points 30 meter apart in 1 second. From what point above the upper point it begins to fall? Okay, so here in this particular case, consider the body is falling freely. That means suppose assume that this is a tower. Assume that this is a tower of some height, whatever height may be. And here in this particular case, the ball is falling freely. The ball is falling freely. That means its initial velocity is 0. And acceleration due to gravity is vertically downward. Let's take the value of a as g. And it passes 2 points 30 meter apart in 1 second. So initially u is 0. That means in time t equal to 0. After 1 second, that means after some time what actually happens is that this ball will fall freely and after some time it will reach the ground. So within whatever the time interval may be after which it will reach the ground, जो भी टाइम है उसके बाद जो ग्राउंड में पहुंचेगा उसी के अंदर में क्या होता है यहाँ पे बोला गया है, there are two points which are separated by a distance of what? These 2 points are separated by a distance of 30 meter and that body crosses these 2 points in 1 second. ये 2 पॉइंट को वो 1 सेकेंड में क्रॉस करता है. सो फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगिंस टू फॉल. तो ये जो अपर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उससे कितना ऊपर से ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है. क्लियर? सो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है. क्लियर? सो दैट मीन्स हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, suppose it crosses the 2 points, that means AB, the distance between AB is 30 meter. So here in this case, can we write the equation for x? That means the displacement x
मान लो कि टी टाइम के अंदर में वो एक्स डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट एक्स will be x is equal to ut plus half at square, but initial velocity is 0. So and acceleration due to gravity here in this particular case will take this one as the reference, that means origin to be over here, this is the origin. एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन है उसी को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स हाफ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव हियर, सो हाफ जी एंड हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, लेट इट बी टी स्क्वायर. मान लो कि यहाँ पे जो पहुँचेगा वो उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट मीन्स इट इज़ रीचिंग ओवर हियर इन टी टाइम. क्लियर. नेक्स्ट इफ वी राइट द इक्वेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस एट पॉइंट बी. Clear. So when the object will reach at point P, that means how much distance it will cover? It will cover distance of x plus 30. So that means x plus 30 will be equal to ut plus half a t square. And here in this particular case initial velocity is 0, so this term becomes 0, so half into g into t. Okay, so if the object or the body takes जो ये अगर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसको टी टाइम लग रहा है ए तक पहुँचने के लिए, तो ए से बी तक का जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड बताया गया है. सो दैट मीन्स बी तक पहुँचने के लिए उसको पूरा का पूरा कितना टाइम लगेगा, टी प्लस वन. सो इट विल बी टी प्लस वन स्क्वायर. So what we are getting? We are getting two equations. X is equal to half gt square first, and second one is x plus 30 equal to half gt plus 1 square second. So if we take the difference of these two equations, so then I think we can get the value of t, and after that we can get the value of this x. So first of all we'll subtract. So 2 subtracting 1 from 2, so that means how much we'll be getting? So we'll be getting x plus 30 minus x equal to half g t plus 1 square minus half g t square. So from here what we can get, so it will be getting 30 will be equal to half, take it common, so t plus 1 square minus t square. So this is the case. So we'll be getting g by 2, so square plus 1 plus 2t minus t square. So t square got cancelled, so we're getting g by 2 into 1 t equal to 30. So and here it is saying that to take the value of g as 9.8. If we'll take the value of g as 9.8, then what we'll be getting, 1 plus 2t will be equal to 60 by g, and 60 by g is nothing but 60 upon 9.8, and the value of 2t will be equal to 60 upon 9.8 minus 1, so it will be 60 minus 9.8 divided by 9. So the value of t will be equal to 60, that is 50.2 divided by 9.8 into, so it will be approximately how much we'll be getting, we'll be getting 20.1 divided by 9.8. Okay, if we divide these two, it will be, we divide these two, how much we'll be getting, so t will be approximately 251 upon 98, so 251 upon 98. So if we do divide this one, 98 to ja how much, to 16, then to 18, 19, 196. So how much will be getting, 5, 14, that much will be 6, so we'll be getting 5, take this. Okay, not 6, it is 4, it is 4. Here we'll get how much, 4, this is 1, take 11, 5, so 14, subtract 9, subtract 9 from 4, 5, 5, 55, so getting how much, 55.
take a decimal, so 550 over here, 5 5, okay. Put 5, we'll put 5, so how much we'll be getting? So 3 5 4 6 6, so 6 and 1, so we'll put over here, so approximately we'll get 2.5. So here how much time we'll get? Time will be getting 2.5 time यहाँ पे. Then what we can get, we want to calculate the value of x. हमें यहाँ पे x पूछा गया. Then the value of x will be how much? The value of x will be equal to half यहाँ पे x का वैल्यू कितना? हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर. तो हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना है? 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 2.56 square here. So here the thing is that why it is taking so much time, because we are taking the value of g as 9.8, or instead of that if we take the value of g it will be quite easier. Instead of that one, if we take the value of g as 10, then how much we can get? So here in this particular case, approximately take it this one as 2.5, then it will be 0.5, and here it will be 9 point, that means take it 10 divided by 2, so approximately 2 5s are 10, so getting, so approximately 30, above 30, more than 30. So here you can check the answer, which one is nearly equal to 30. So 32 and 16 4, so option A will be the correct. But my dear students, it is a task for you to find out the accurate value of this one here. So half into 9.8, 9.8, if you do that one, so it will be 4.9 into 2.56 square. Find out the value, and approximately this value will be 32.1 meter here. So that means the body will fall from a height of 32.1 meter here. Next, moving to question number 61 here. So here in question number 61, what it is saying is that a player throws a ball upwards with an initial speed of 30 meter per second. A player throws a ball upwards, suppose this is the ground, and the player is throwing the ball in the upward direction with an initial speed of 30 meter per second. How long does the ball take to return to the player's hands? That means this ball will move upward like this, and it will reach the highest point, and at the highest point it will take U-turn, and it will return to the player's end once again. Clear? So this is the case. So how long will it take? तो कितना टाइम उसको लग गया? तो ये मतलब this is the case of time of flight. In motion under gravity, what is the value of time of flight? So here in this particular case, that means how much time will it take to return to the same place? Clear? So if it is the case, then displacement over here is 0. Clear? Here what? Displacement is becomes 0, but the equation for displacement is s equal to ut plus half a t square. So displacement is 0, that means here acceleration due to gravity is vertically downward. अपवर्ड वेलोसिटी यहाँ पे उसको हमें पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसको हमें नेगेटिव लेना है. सो u इज पॉजिटिव, सो u t plus half a is minus g into t square. So how much will be getting the value of t? So half g t square will be equal to ut. So 1t got cancels, so t equal to 2u by g. That means total time taken will be, the direct formula we can use over here is 2u by g. That means time taken is twice of initial velocity. Initial velocity is 30 divided by g. It is saying that take the value of g as 10, so 10 यहाँ पे 0 कट रहा है. So how much will be getting? 6 seconds. So how much time will it take? It will take 6 seconds. Moving to question number 62. A girl standing
on a stationary lift open from above throws a ball upward with an initial speed of 50 meter per second. The time taken by the ball to return to her hand is, okay, lift, okay, stationary lift is at rest, lift is at rest, लिफ्ट यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, एंड उसका ऊपर वाला पार्ट जो वो खुला है, एंड the girl throws the ball with a speed of 50 meter per second. That means initial speed is 50 meter per second. So here in this particular, and the lift is at rest, lift is at rest, that means acceleration is 0. Clear? If acceleration is 0, that means we cannot use the here in this particular case lift is at rest. Okay, fine. Okay, lift का जो acceleration है वो 0 है, but the girl is throwing the ball. That means throwing the ball, that means inside the lift there is a girl which is present over here. Clear? And she is throwing a ball in the upward direction. That means it will move up and take U-turn and come to her hand once again. Clear? So that means there is a motion of the ball. That means we can apply the equations of uniformly distributed motion to the ball, but we cannot apply any other case to this particular lift because acceleration of the lift is 0. इसका acceleration 0 है. So finally here in this particular case we can use the formula for the same that in the what we got in the previous question. So time taken to reach to the same place is 2u by g, and it is also asking the time taken by the ball to return to her hand. तो ये वैल्यू कितना होगा, twice of initial velocity is 50, और g का वैल्यू यहाँ पे कितना लेना है, 10 लेना है. So 0 0 got cancel, so how much it will take, 10 seconds. So option B will be the correct. Moving to question number 63, it is a connected question of 62. If the lift starts moving with a uniform speed of 5 meter per second moving upward direction में, that means here in that particular case if we take the lift, if we take this as the lift, and right now this lift is moving upward with a speed of 5 meter per second and this is constant, that means acceleration is 0. Then the girl who is present inside the lift, जो गर्ल है यहाँ पे जो लिफ्ट के अंदर में है वो वही काम कर रहा है, वही, that means she is throwing the same ball with a speed of 50 meter per second. Then what will happen, that means there is no acceleration of the लिफ्ट, लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो मतलब लिफ्ट के केस में हम कोई भी काइनेमेटिक इक्वेशंस अप्लाई नहीं करेंगे. सो द बॉल व्हिच इज थ्रोन बाय द गर्ल that is undergoing uniformly accelerated motions, then how long does the ball take to return to her hand, तो उसके हाथ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वही सेम 10 सेकेंड ही लगेगा, 10 सेकेंड ही निकल आया था ना लास्ट टाइम, कितना आया था 10 seconds. So here also 10 seconds, it will take the same time. Clear? No change in the answer. अगर एक्सेलरेशन हो रहा होता तो उस केस में हमें कुछ दूसरा इक्वेशन वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता. Okay, in question number 64, what is saying, it is a common observation that rain clouds can be at about 1 kilometer altitude above the ground. Okay, so suppose if this is the ground, clear, and these are the rain clouds, clear, and here in this particular case, if a raindrop falls from such a height, and these rain clouds, what it is saying is that these rain clouds are at a height of how much, at a height of 1 kilometer from the ground. This is the ground, and suppose that means what, if a raindrop will fall, that means it will fall from a height of how much, 1 kilometer, this raindrop. Clear? This is a raindrop, that means initially its speed will be 0. Clear? If a raindrop falls from such a height freely under gravity, then what will be the speed in kilometer per hour? So finally when it reaches the ground, what will be the speed? So here in this particular case, as this is the case of free fall motion,
free fall motion, that means initial velocity is 0, final velocity it is being asked, acceleration will be taken as g, because here in this particular case g is vertically downward, and we'll take this one as the reference point, that means origin to be present over here, this is the origin. तो जो भी हम मोशन को यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन को हम मेजरमेंट करेंगे तो ओरिजिन के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो मोशन है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो ए जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, जी होगा, एंड दैट विल बी पॉजिटिव. सो फाइनली एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेट इट बी एच, एंड हियर इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज़ एक्चुअली 1 किलोमीटर. तो अगर हम ये हम इसके लिए एक इक्वेशन यूज करेंगे, सो दैट विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. सो v that we want to find out, v square minus u is 0 equal to 2, a is g and s is h, so v is equal to under root 2gs. so this is the direct formula we can apply in case of free fall motion, that means the velocity when the object which is falling freely when it reaches the ground. Clear? So here if h is 1 kilometer, that means 1000 meter, then the value of b will be equal to 2 into the value of b, g it is saying 10, 2 into 10 into 1000, so under root. So how much it is coming? So it is coming out to be 100 रूट 2. ये कितना आ रहा है, 100 रूट 2, 100 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड व्हाट इज सेइंग, इट इज आस्किंग टू फाइंड इन किलोमीटर पर आवर. सो इन किलोमीटर पर आवर दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 100 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, विच इज कमिंग, सो 100 रूट 2 इंटू 18 upon 5. Clear? So that value will be approximately, this will be 20 root 2 into 18. So how much? Root 2, that means 18 to जा 36, 360, root 2 का वैल्यू है कितना, 1.414. so 36 into 14.4, so how much it will be coming? So let it be approximately equal to 14. so if it is approximately 14, so will be so it will be 4 and at mera 8, so 4285, approximately more than 500. so more than 500, not 600. so here in this particular case more than 500, that means if we take 14.4 also 0.4, that means nearly approximately 510. so 510 will be the correct one. Clear? Approximately how much result will get? Will get 510 किलोमीटर पर आवर, इतना में आएगा आंसर. क्लियर? Okay, so here in question number 65, what it is saying is that a man is standing on the top of a building 100 meter high. Okay, so here in this particular case there is a building, suppose this is the ground, there is a building whose height is how much, whose height is given 100 meter. Okay, a man is standing over here. He throws two balls vertically upward, one at t equal to 0. यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दो बॉल्स यहाँ पे ले रहा है. इज टेकिंग टू बॉल्स, वन इज दिस वन एंड टू बॉल्स. यहाँ पे उसके पास दो बॉल है. क्लियर? दो बॉल है, दो बॉल्स को वो ऊपर की तरफ यहाँ पे छोड़ रहा है. वन एट टी इक्वल टू 0 एंड अदर एट टाइम इंटरवल ऑफ लेस देन 2 सेकेंड. एक को वो क्या कर रहा है, एक को 0 सेकेंड में भेज रहा है. मान लो कि इसको 0 सेकेंड के टाइम में भेज रहा है, तो इसको लेस देन मतलब क्या उसके बाद 2 सेकेंड के अंदर में, मतलब 1.5 सेकेंड हो, क्या 1.6 हो, 1.7 हो, 1.8 हो, 1.9 हो सकता है, 1 भी हो सकता है. लेस देन 2 सेकेंड्स के बाद ये सेकेंड बॉल को यहाँ पे भेज रहा है. क्लियर?
द लेटर बॉल इज थ्रोन एट ए वेलोसिटी ऑफ हाफ ऑफ द फर्स्ट। तो पहला जो बॉल है उसका स्पीड अगर यू है तो सेकेंड जो बॉल है उसका स्पीड कितना है, सेकेंड बॉल का स्पीड कितना है यहाँ पे u/2 एंड इट इज़ थ्रोन एट टाइम दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम्स मीन्स 1.6 या फिर 1.7 सेकेंड्स ऑफ द फर्स्ट, और वो भी टाइम हमें मालूम नहीं है। द लेटर बॉल इज थ्रोन at a velocity of half of the first. Okay, fine. The vertical gap between the first and second is 15 meter at 2 second. मतलब पहला जो बॉल है उसको प्रोजेक्ट करने के बाद तो सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन ऐसा होगा 2 सेकंड के बाद शायद मान लो कि ये जो पहला बॉल है वो यहाँ पे होगा। क्लियर? फर्स्ट बॉल विल बी ओवर हियर, फर्स्ट बॉल विल बी ओवर हियर। क्लियर? और ये जो सेकंड बॉल है, सेकंड बॉल मान लो कि ये इसको हम ग्रीन, ये जो ब्लू कलर से थोड़ा इंडिकेट, स्काई कलर से इंडिकेट करते हैं, तो सेकंड बॉल कहाँ पे होगा, सेकंड बॉल लेस देन 2 सेकंड के बाद उसको भेजा गया है, तो सेकंड बॉल विल बी समवेयर एल्स, यहाँ पे होगा। मतलब उसका जो रिलेटिव पोजीशन अगर हम देखेंगे तो 2 सेकंड आफ्टर 2 सेकंड सिनेरियो क्या होगा, तो पहला बॉल जो अगर मान लो कि यहाँ पे है तो दूसरा बॉल कहाँ पे होगा, दूसरा बॉल यहाँ पे होगा, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, वो है 15 मीटर, और वो टाइम कितने के बाद, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। क्लियर? एंड व्हाट इट सेइंग, द गैप इज फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट। ये जो गैप है ये कांस्टेंट रह रहा है। दैट मीन्स व्हाट, दिस फर्स्ट बॉल विच इज द रेड वन, first ball matlab that means what, this will at 2 second it might be having some speed and it will reach the highest point. That means at the highest point, that means if the ball reaches the highest point over here, if this is the highest point, that means that sky color ball that will also reach its highest point over here. That means ये जो gap है ये constant रहेगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्या, that gap will remain constant। Clear? अगर ये गैप यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है तो द वेलोसिटीज विथ विच द टू बॉल्स वेर थ्रोन आर, तो ये जो कितना वेलोसिटी से ये दोनों बॉल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है। क्लियर? तो सिंपल फंडा यहाँ पे ये है कि अगर ये जो टावर है, ये टावर जो जहाँ पे ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये जो टावर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट अगर ये है, एंड द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर एंड द बॉल्स आर एट देयर हाइस्ट पॉइंट, ये बॉल उसका हाइस्ट पॉइंट में है, और ये जो स्काई कलर बॉल है ये भी उसका हाइस्ट पॉइंट पे यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट बॉल and this is the second ball, and here in this particular case, okay, these are the cases. तो what is their initial speeds, तो initial speed यहाँ पे कितना है, तो फर्स्ट बॉल का जो इनिशियल स्पीड था, फर्स्ट बॉल का इनिशियल स्पीड था u, और सेकेंड बॉल का कितना है, u/2। क्लियर? इनिशियल स्पीड्स आर लाइक दिस। तो कैन वी राइट द इक्वेशंस for first case for reaching the highest point? फर्स्ट बॉल का इनिशियल स्पीड u, यहाँ पे u है, एंड एक्सेलरेशन इज -g। क्लियर? एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे वर्टिकल, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर? तो a is taken as -g and at the highest point velocity is 0. So what we can say, we can write the equations of motion. Clear? So which equation of motion that will be applying over here? Clear? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इतना टाइम पे आपको लिखना है। तो हाईएस्ट पॉइंट जब पहुँचेगा तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, सो हाईएस्ट पॉइंट के लिए h, अब मान लो कि ये h साइड जा रहा है, सो v² - u² इक्वल टू 2as, ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। क्लियर? अब एज्यूम कर लो यहाँ पे कि जो हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रोन, ये हाईएस्ट पॉइंट इसका मान लो कि ये h1 हाइट पर अगर है, तो ये जो बॉल होगा, ये सेकेंड बॉल, ये कितना हाइट पर होगा, ये h2। क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में
हम इसको अगर अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो रहा है फास्ट बॉल का। तो जीरो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 × -g × s इज हाउ मच, h1। that means h1 will be equal to how much, u square upon 2g। क्लियर, ये h1 है। सिमिलरली फॉर सेकेंड बॉल के लिए हम लिखेंगे, तो सेकेंड बॉल के लिए हम इक्वेशन वैसा ही लिख सकते हैं। सेकेंड बॉल के लिए इक्वेशन कितना होगा, सेकेंड बॉल कितना हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, h2 हाइट तक जा रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इट विल बी u/2 स्क्वायर अपॉन 2g। so that value will be u square upon 4 into 2g। so h2 will be coming out to be u square upon 8g। h2 का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, u square upon 8g। okay, so right now we got two equations, and here in this particular case the difference, what difference, so here in this particular case the difference, what difference, that h2 minus h, here in this particular case the difference between the highest point of the two balls or maximum height of the two balls is 15 meter। so max distance between the maximum height of the two balls is 15 meter, that means h1 minus h2 is 15। that means what we can write over here, h1 is u square by 2g minus h2 is u square upon 8g equal to 15। so here in this particular case take u square by g common, u square by g if we take common, so it will be 1/2 minus 1/8 equal to 15। so finally if we will solve this particular case, how much will be getting, will be getting u square upon g, LCM will be 8, LCM is 8, then so it is 4 minus 1 equal to 15। so for 3/8, 3 u square upon 8g equal to 15। so 3 5 ja 15, so how much value of u will be coming, so u square will be equal to 8 into 5 into g, so 40g, so 40g means, so it is 40 into 10, the take the value of g as 10, so it will be 400। so the value of u square will be 400, that means u will be coming out to be 20। so u initial velocity u is coming out to be 20, that means this is the speed of first ball। then what will be the speed of second ball, which is projected after less than 2 seconds, the speed of, then speed of second ball will be equal to u/2, that is 20 upon 2, that is 10 meter per second। clear, so these are two answers, so first के लिए 20, second के लिए 10, first 20 second 10, first 20 second 10, so option A will be the correct। And in question number 66, here in what it is saying, a body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom। clear, so let us consider a smooth inclined plane। okay, here a body, let us consider an object or a ball। clear, a body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom। तो यहाँ पे नीचे तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड्स लग रहा है। क्लियर, दैट मीन्स हाउ मच हाइट, कितना हाइट नीचे आ रहा है, लेट इट बी h। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एट द टॉप पॉइंट। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टॉप। ओके, 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप। क्लियर, तो ये वाला केस में तो पहले तो h निकाल लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0।
Okay, here this is a case of uniformly distributed motion. तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. क्लियर. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, सो ड्यू टू दैट वन द बॉल इज फॉलिंग और स्लाइडिंग डाउनवर्ड, उसकी जिसके वजह से वो बॉल यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है. तो एच कैसे निकालेंगे, तो वही सेम केस. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो है, एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज जी. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है और मोशन भी डाउनवर्ड है. एंड ओरिजिन यहाँ पे हम लेंगे, दिस विल बी टेकन एज ओरिजिन. क्लियर. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो कितना हाइट नीचे आ रहा है 4 सेकेंड के अंदर में, नीचे तक तो आ रहा है, तो कितना हाइट नीचे आ रहा है. तो ये जो केस है इसको हम वही काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज करके सॉल्व करेंगे. सो व्हिच इक्वेशन विल बी अप्लाइंग ओवर हियर. 4 सेकेंड में नीचे तक आ रहा है, तो एस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और तो हम यहाँ पे ओरिजिन से नीचे की तरफ का जो मोशन है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो दैट विल बी पॉजिटिव. इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, सो द डिस्टेंस बिकम्स जीरो. सो हाफ इंटू जी, हाफ जी, एंड हियर इट इज टी. दैट मीन्स टी कितना लग रहा है यहाँ पे, 4 लग रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है 4 स्क्वायर. सो इट विल बी हाफ इंटू 10 इंटू 16. Clear. So the value of h is coming to be, this is 5, so the value of h is coming to be 80. तो 80 मीटर. सो ये जो हाइट है ये कितना आ रहा है, 80 मीटर आ रहा है. क्लियर. अच्छा, ये अगर 80 मीटर आ रहा है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हाउ मच डज इट टेक टू कवर 1/4 डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मतलब टॉप से 1/4, तो इसको हाफ कर लेते हैं, तो ये 1/4 होगा. क्लियर. तो ये जो 1/4 डिस्टेंस है, ये 1/4 डिस्टेंस दैट मीन्स कितना होगा, तो ये पूरा का पूरा 80 अगर है तो ये 20 होगा, 20 मीटर. तो 20 मीटर डिस्टेंस नीचे आने के लिए, 20 मीटर डिस्टेंस नीचे आने के लिए मतलब यहाँ तक बॉल को यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. क्लियर. तो 20 मीटर डिस्टेंस नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज 20. तो 20 एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर. 20 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगेन दिस विल बिकम जीरो, क्यों, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द रेस्ट. सो फाइनली इट विल बी हाफ इंटू ए का वैल्यू आपको जी लेना है और टी का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, एंड दैट वैल्यू इज 20. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 40 इज इक्वल टू 10 इंटू टी स्क्वायर. सो 0 0 कट जा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ टी विल बी इक्वल टू √4, दैट इज 2 सेकेंड. तो कितना टाइम के बाद वो यहाँ पे 1/4 डिस्टेंस कवर कर लेगा, दैट मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड. क्लियर. 2 सेकेंड के बाद. Okay, in question number 67, what it is saying, a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building of 20 meter height. Okay, there is a multi-story building whose height is given, how much, that height is 25 meter, height of the building, and the ball is thrown, there is a ball which is thrown vertically upward with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में उसको ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है. क्लियर. हाउ हाई विल द बॉल विल राइज. सो हम क्या करेंगे इस वाले पर्टिकुलर केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस विल टेक दिस वन एज द रेफरेंस. दिस विल बी टेकन एज द रेफरेंस मतलब जो भी मोशन हम कंसिडर करेंगे यहीं से कंसिडर करेंगे. तो कितना हाई यहाँ पे राइज करेगा बॉल. सो हाइट का फॉर्मूला क्या था, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. जस्ट वी गॉट प्रीवियसली वाइल कैलकुलेटिंग द फॉर्मूला. क्लियर. तो एच का वैल्यू कितना है, यू स्क्वायर बाई 2g. यू इज हाउ मच, यू इज 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी का वैल्यू यहाँ पे कितना बोला गया, 10. सो इट विल बी 400 डिवाइडेड बाई 20. सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 20. सो कितना हाइट जाएगा, 20 मीटर. क्लियर.
सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ओके, यहाँ पे यहाँ पे ये बोला गया है हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्लियर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कितना हाइट ऊपर जाएगा, तो कितना हाइट ऊपर जाएगा, यहाँ से ये 20 मीटर ऊपर तक यहाँ पे बॉल जाएगा। क्लियर, बॉल यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्लियर, और अगर ग्राउंड से पूछा गया होता तो ग्राउंड से कितना हाइट होगा, 45 मीटर, 20 + 25 तो इट विल बी 45। सो दिस इज 20 मीटर फ्रॉम द top of the building and from height from the ground। ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 25 + 20, सो इट विल बी 45 मीटर। तो ग्राउंड से 45 मीटर ऊपर। Okay, here it is a connected question. In question number 67, the time taken by the ball to reach the ground is clear। कितना टाइम उसको लग गया वो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। So let me copy that figure here in this particular case। Okay, we'll paste it over here। Okay, here। Okay, so here in this particular case, this is our ground and this is the tower, and it is asking द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज। कितना टाइम उसको लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो बॉल यहाँ पे अपना मोशन कहाँ से शुरू कर रहा है, बॉल अपना मोशन यहीं से रेफरेंस से शुरू कर रहा है। क्लियर, तो रेफरेंस से हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या लेना है, साइन कन्वेंशन में अपवर्ड मोशन को हमें पॉजिटिव लेना है। क्लियर, रेफरेंस से, और रेफरेंस से डाउनवर्ड मोशन को हमें नेगेटिव लेना है। क्लियर, तो बस इतना ही है। तो अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव लेना है। तो इसमें जो बॉल ग्राउंड तक पहुंचेगा तो ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ग्राउंड तक आएगा। क्लियर, यहाँ पे मोशन उसका कैसे होगा, द मोशन विल बी लाइक दिस, द बॉल विल मूव टिल द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर यू टर्न लेगा, और यू टर्न ऐसे लेते हुए तो ये क्या होगा, ग्राउंड तक ऐसे आएगा। क्लियर, तो ग्राउंड तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। क्लियर, तो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, तो डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर डाउनवर्ड। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल, और वो भी नीचे की तरफ हो रहा है तो नेगेटिव हमें लेना है। क्लियर, सो हमें इक्वेशन कौन सा यूज करना है, विल बी यूजिंग द इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t square। We'll be using this particular equation। So here displacement is negative 25, initial velocity is how much, initial velocity is 20, upward है तो positive लेना है, time that we want to calculate plus half, acceleration due to gravity ये हमें -g लेना है यहाँ पे, and t square। So it will be -25 equal to 20t, एंड यहाँ पे माइनस जी का वैल्यू यहाँ पे अगर हम 10 लेंगे सो इट विल बी 5t स्क्वायर। सो फाइनली द इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इक्वल टू 0। सो इट विल बी t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका रूट्स जो हम निकालेंगे तो ये किससे होगा, सो टी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे, तो इसका अगर हम लिखेंगे तो कितना होगा, -5t प्लस टी माइनस 5 इक्वल टू 0। सो टेक टी कॉमन, सो टी माइनस 5 प्लस टेक 1 कॉमन, सो टी माइनस 5, so that equal to 0। So from here what we'll be getting, t minus 5 into t plus 1 equal to 0। so the roots are coming to be 5 comma -1। clear, तो टाइम तो नेगेटिव नहीं होगा कभी, सो दिस विल बी रॉन्ग। सो टाइम टेकन इज 5 seconds। सो टाइम टेकन इज हाउ मच, 5 seconds। दिस विल बी द आंसर। so 5 seconds will be the correct one।
Okay, so here in question number 69, question number is saying that two trains A and B, each of length 400 meter, are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 kilometer per hour in the same direction, with A ahead of B. Suppose there are two trains. This is train A, and train A is ahead of B. Train A is ahead of B. Okay, train B, and these are moving in two parallel tracks. This is moving in two parallel tracks like this. Clear? And the driver B decide to overtake A and accelerates by 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ड्राइवर बी जो है वो क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कि ए को एक्सेलरेट करेगा. तो दिस इज द इंस्टेंट व्हेन द ड्राइवर डिसाइड्स टू एक्सेलरेट. तो यहाँ पे बी का जो मोशन है यहाँ पे हमें कंसिडर करना है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? And after 50 seconds, the guard of B just brushes past A. Clear? तो जो गार्ड ऑफ बी है, ए मान लो कि यहाँ पे अगर है, इफ दिस इज द पोजिशन ऑफ ए आफ्टर 50 सेकेंड्स, देन गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट. बी का जो गार्ड है वो पीछे ही होगा, ये बी है और ये ए है. क्लियर? दैट मीन्स इट जस्ट क्रॉसेस ए. व्हाट आर द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम? क्लियर? तो कितना ओरिजिनल डिस्टेंस उन दोनों के बीच में था. तो ए यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो ए का एक्सेलरेशन 0 क्या हो रहा है? ए का एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है. दैट मीन्स इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे कितना है? v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 72. दैट मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर. तो 72 इंटू 5/18. So it will be 20 meter per second. So it is moving with 20 meter per second. Clear? और B का केस में क्या हो रहा है? B का केस में यहाँ पे ये हो रहा है कि B जो है उसका यहाँ तक तो स्पीड है 72. क्लियर? यहाँ तक उसका स्पीड 72 है. दैट मीन्स हियर इट इज 72 किलोमीटर पर आवर, और यू कैन से 20 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ तक. यहाँ इसके बाद उसका क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में. उसका स्पीड जो है 20 से बढ़ रहा है. क्लियर? बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड भी होगा. क्लियर? तो फाइनली 50 सेकेंड के बाद ये सिनेरियो हमें मिलता है, ये वाला सिचुएशन हमें कब मिलता है? एट 50 सेकेंड में हमें ये मिल रहा है. क्लियर? Okay, so find how much distance is covered by both the train in 50 seconds. So distance motion of train A. तो ट्रेन ए का मोशन अगर हम लेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन इज 0. दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है. एंड टी वी हैव टू टेक 50 seconds. Then what will be the distance covered? So we know that v is equal to x upon t. That implies x equal to v into t. That means here it will be u into t. So u is 20 into 50. So it will be how much? 1000. Clear? So 1000 meter. So that means xa is coming out to be how much? 1000 meter. That means xa, that means train A कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 सेकेंड के टाइम में 1000 मीटर. क्लियर? नेक्स्ट, मोशन ऑफ ट्रेन बी का अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो उसका इनिशियल स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन इतना यहाँ पे कितना है? 1. एंड टाइम 50. तो इसके बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो दैट वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी हाउ मच? यू इज 20 इंटू 50 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी इज 50 स्क्वायर. सो दैट वैल्यू विल बी 1000 प्लस 50 स्क्वायर, दैट इज 2500 डिवाइडेड बाई 2. 2500 divided by 2, so that will be approximately how much? So it will be 1250 plus 1000, so 2250.
so 20 to 50 meter. So this is nothing but displacement of B, that is 20 to 50 2250 मीटर उसका 10B का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मतलब 50 सेकेंड के बाद A का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1000 मीटर और B का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2250 मीटर। सो फाइनली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो कि उन दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस बताएगा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, relative displacement will be xb minus xa, and that value will be equal to 2250 minus 1000, so it will be 1250 meter। तो ये वैल्यू कितना होगा 1250 मीटर। तो फाइनली विल चेक द आंसर, इट विल बी 1250। Okay, moving to question number 70. The velocity of a particle at n instant is 10 meter per second. Okay, after 3 seconds its velocity becomes 16 meter per second. The velocity at 2 seconds before the given instant will be, okay, before the given instant, okay, here at any instant, at suppose at time t the velocity is 10 meter per second. Suppose here in this particular case, let at time t the velocity be 10 meter per second, clear, and after 3 seconds the velocity will become 60 meter per second। तो 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी u अगर हम 10 लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, v यहाँ पे कितना हो रहा है 16 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, एंड टाइम इंटरवल इज 3 सेकेंड, यहाँ पे टाइम इंटरवल टी प्राइम मान लो लेते हैं। देन व्हाट विल द एक्सेलरेशन, सो v इक्वल टू u प्लस a t प्राइम, फाइनल वेलोसिटी इज 16 इक्वल टू 10 प्लस a t प्राइम इज 3, क्लियर। So finally how much will be getting, so 3a equal to 10, 16 minus 10 that is 6, so a will be equal to 2 meter per second square। So acceleration is coming out to be how much, 2 meter per second square। Okay, fine, if acceleration is coming out to be 2 meter per second square, then here in this particular case what it is saying, the velocity at 2 second before the given instant। तो ये जो instant मान लो कि जो इंस्टेंट यहाँ पे t यहाँ पे बताया गया है, ये सिचुएशन आप ऐसा ही मान लो कि यहाँ पे एक मोशन है, ये एक पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, और 3 सेकेंड के बाद उसका यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो रहा है 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इंस्टेंट t यहाँ पे हम लोग ले लिए थे उससे 2 सेकेंड पहले, 2 सेकेंड पहले यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियली यू दैट वी वांट टू फाइंड आउट, v इज 10 मीटर पर सेकेंड, time interval is 2 second and a is 2 meter per second square। Then we'll use the formula v equal to u plus at, v is 10, u we want to find out, plus a is 2 into time is 2, so the value of u will be coming out to be 10 minus 4, that is 6 meter per second। तो ये कितना आएगा 6 आ रहा है ना, u, so 2 into 2 4, 10 minus 4, that is 6 meter per second, so it will be 6 meter per second। Okay, so here in question number 71 what it's saying is that a body covers a distance of 4 meter in third second, a body covers a distance of 4 meter in third second and 12 meter in fifth second, clear। So that means displacement in nth second, that formula that means they are saying is that displacement in nth second can be written as u plus a by 2 into 2n minus 1, where u is the initial speed
and initial speed or velocity, and n is the nth displacement in nth time. Clear? In the last nth second. Clear? If the motion is uniformly accelerated, how far will it travel in next 3 सेकेंड? अगर मोशन यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है तो इसलिए तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? सो व्हाट इज सेइंग? डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड दैट कैन बी रिटन एज s इक्वल टू u प्लस a by 2 into 2 into 3 minus 1. Clear? So that value will be u plus a by 2 into 6 minus 1, that means 5. So displacement in third second, which is nothing but 4 meter, that means u plus 5 a by 2 equal to 4 meter. Clear? Okay, this is equation 1. Similarly, if we write the displacement in fifth second, displacement in fifth second, that will be equal to u plus a by 2 into 2 into 5 minus 1. So it will be u plus 2 into 5, that is 10 minus 1, 9. So it will be 9a by 2. And what is that value? That value is 12 meter. So 12 meter, it is 12. So that means u plus 9a by 2 equal to 12. This is equation number 2. So solving these two equations, first of all we will try to find out the value of a and u. Clear? ऐसा ही एक प्रॉब्लम हम लोग पहले ही कर चुके हैं. So इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो टेक द डिफरेंस. सो सब्ट्रैक्टिंग किसको 2 से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो u will get cancel. So 9a by 2 minus 5a by 2 equal to 12 minus 4, that is 8. So 9 minus 5, that is 4. A by 2 equal to 8. So this is 2a. So a equal to how much? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर a का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल रहा है तो u का वैल्यू कितना होगा? सो कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. सो u प्लस 5 इंटू a, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 यूजिंग इक्वेशन 1. Clear? So finally how much will be getting? So it will be 2. So u plus 5 to the 10 equal to 4. Clear? So the value of u will be coming out to be how much? U will be coming out to be 4 minus 10, that is minus 6 meter per second. So finally the value of u that we are getting is minus 6 meter per second. Clear? So right now what it is asking, how far will it travel? How far will it travel in next 3 seconds? Clear? फिफ्थ सेकेंड मतलब फिफ्थ सेकेंड तक तो हो गया है, मतलब क्लियर. फिफ्थ सेकेंड मीन्स लास्ट 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 12 मीटर. थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब क्या? 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है? 4 मीटर है. तो 5 सेकेंड तो हो गया है. तो 5 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड मीन्स फ्रॉम 5 सेकेंड टू 8 सेकेंड. तो डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, यह हमें निकालना पड़ेगा. क्लियर? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड? डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, तो हमें जनरल फॉर्मूला यूज़ करना है. कौन सा फॉर्मूला? हमें फॉर्मूला यूज़ करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है. क्लियर? सो S8 को हम कैसे लिखेंगे? सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अच्छा, ये वाला पार्ट को अगर हम यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे तो here displacement S8 can be written as
it will be formula what we can write, ut plus half at square. So how will we write? So ut plus half at square, ut plus half a t square for 8 minus ut plus half a t square for 5. क्लियर? फॉर 8 सेकेंड एंड फॉर 5 सेकेंड, यहाँ पे टाइम होगा 8 सेकेंड और यहाँ पे होगा 5 सेकेंड. सो u इज हाउ मच? u वी ऑलरेडी गॉट, u इज -6 into 8 plus half. A is how much? Acceleration is 4 into t is 8 square. Okay, this is what we are getting, and minus ut. U is -6 into t is 5 plus half. A is 4 into t is 5 square, this value. Clear? So finally minus 48 plus, here it is, where we can write 2 is 4, 64 into 2. 64 into 2, so 2 4 is 8, 128 minus, here how much will be getting? Here we will be getting minus 30 plus 2 is 4, 25, 50, getting 50. So it will be 128 minus 48. So how much will be getting? So 0, 80 minus, and here it will be coming out to be 50 minus 30, that is 20. So 80 minus 20, that is 60. So displacement in the last 3 seconds will be how much? 60 meter. Okay, so 60 meter will be the correct one. Okay, next moving to question number 72. Here what it's saying: stopping distance of a moving vehicle is directly proportional to which of the following? Square of initial velocity, square of initial acceleration, initial velocity, initial acceleration. Okay, fine. So stopping distance means, suppose initially it will be having some velocity, finally velocity becomes 0. Final velocity becomes 0. The initial velocity, let it be having some initial velocity, let u be equal to v. Clear? And final velocity which is equal to 0. Clear? Final velocity, let it be v prime. Here v prime and initial velocity u prime. Okay, and after how much distance its final velocity becomes 0, let the distance covered be s. Then it is undergoing uniformly retardation. Clear? Uniformly retardation, that means acceleration should be negative. So that means what we can write? V square minus u square equal to 2as. This formula will be writing final velocity, that is v prime square minus u prime square. Clear? Here it is v prime square minus u prime square is equal to 2as, but v prime is 0. 0 minus u prime is v square equal to 2 into minus a into s. Clear? So minus v square equal to minus 2as. So finally here is negative got cancelled. So finally s is equal to v square upon 2a. S is coming out to v square upon 2a, and this v is nothing but what? This is initial velocity. This v over here is what? This is the initial velocity. Clear? So finally this stopping distance depends upon which of the following? It depends upon the square of initial velocity. Clear? It depends upon the square of initial velocity. Next, moving to question number 73. Okay, so here what it is saying: a car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by applying brakes after moving at least 6 meter. Clear? Okay, तो finally यहाँ पे क्या है बोला जा रहा है कि initially the car is moving with a speed of 50 km per hour
एंड कैन बी स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स मूविंग एटलीस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। तो यहाँ पे फाइनली उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है। इफ़ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, वही कार अगर मान लो कि यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में अगर मूव कर रहा है, क्लियर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइनल तो उसका वेलोसिटी तो 0 होगा। तो 6 के बाद 0 होगा कि 7 के बाद 0 होगा, वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। तो ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा, एक्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्लियर। सो राइट नाउ जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन, द प्रीवियस इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड द relationship between stopping distance and initial velocity. And what is the stopping distance? Stopping distance s will be equal to u square. Stopping distance, how much we have calculated? It is nothing but u square upon 2a, clear. So it is what? Stopping distance is u square upon 2a. So in the first case, s1 will be equal to u1 square upon 2a, क्लियर। इसमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इस रिटार्डेशन को हम माइनस से लेते हैं, और वही सेम केस है, ये वाला केस ले लो, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 50 लिखा गया है। तो वही कार के लिए वही सेम कार, इसमें क्या बताया गया है, इफ़ द सेम कार, क्लियर, यहाँ पे क्या बताया गया है, सेम कार, मतलब वही कार अगर पहले से 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में अगर मूव कर रहा होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो इस लेसन तो दोनों के केस में सेम होगा, वही मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव है, क्लियर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस विल बी u1 स्क्वायर अपॉन 2a एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इन द सेकेंड केस विल बी इक्वल टू u2 स्क्वायर अपॉन 2a बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस टू? So the ratio of these two will be s1 upon s2 will be equal to 2a got cancelled, simply u1 square upon u2 square, clear. So here in this particular case u1 is 50 and u2 is 100, clear. So s1 is 60, s1 is 6 meter, so 6 upon s2 will be equal to u1 is 50 square upon 100 square, clear. So 50 upon 100, that means it is 1 by 2, that means 1 by 4, it is 1 by 4. So the value of s2 will be how much, 6 into 4, that is 24. Value of s2 will be how much, 24. That means the stopping distance will increase by 4 times. That means what here we can get the conclusion is that the stopping distance, the stopping distance will increase by 4 times if the initial velocity is increased by twice. If the initial velocity is increased by twice. So here in this particular case option D will be the correct one. Next, in question number 74, an object falling through a fluid is observed to have acceleration a equal to g minus bb. Here ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड के थ्रू, लेट अस कंसीडर ए container which is containing some fluid, that means it is some kind of liquid, let it be. An object which is falling through the fluid is observed to have acceleration. तो उसका acceleration पहले कितना था, g minus bb, where g is a gravitational acceleration and b is constant. After a long time of release it is observed to fall with constant speed. पहले मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, this object is falling over here and up to this one, इतना तक क्या हो रहा है, इतना तक में इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ तक, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0. अब इट फॉल विथ कांस्टेंट स्पीड से ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्लियर। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट स्पीड इज
क्लियर। तो कांस्टेंट स्पीड का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन कितना है जी माइनस बी बी, और वही एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है जी 0 हो जा रहा है। तो वही एक्सीलरेशन 0 हो रहा है मतलब जी माइनस बी भी इक्वल टू 0। क्लियर। तो कांस्टेंट स्पीड का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जी माइनस बी भी इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी वी इक्वल टू जी, देन मीन्स बी इज इक्वल टू जी बाई बी। क्लियर। बी इक्वल टू हमारा जी बाई बी, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। Okay, so here in question number 75, what it's saying is that a particle is released from rest from a tower of height 3h. The ratio of intervals of time to cover three equal heights h is okay. Okay, tower का height कितना है यहाँ पे 3h. Okay, find the ratio of the intervals of time to cover three equal heights. टाइम इंटरवल, और वो भी यहाँ पे बोला गया कि थ्री इक्वल हाइट्स के लिए जो टाइम इंटरवल होगा उन तीनों का रेशियो कितना होगा। ओके, पहले तो मान लेते हैं कि टावर पहले ले लेते हैं, बड़ा सा एक टावर लेंगे। क्लियर। एंड टावर का छत थोड़ा टेढ़ा हो गया है, नो प्रॉब्लम। तो ये ग्राउंड है। क्लियर। तो इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी यहाँ पे हम थ्री इक्वल डिस्टेंसेस लेंगे, ये एच एच। क्लियर। so that means थ्री इक्वल रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 3h। तो ये जो टावर है इसका हाइट यहाँ पे कितना है, ये टावर का हाइट यहाँ पे है एच 3h। तो ये कितना हुआ h, तो ये हुआ h और ये हुआ h। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल्स टू कवर थ्री इक्वल हाइट्स। तो इसका यहाँ पे T1 T2 T3 के फॉर्मेट में तीनों टाइम इंटरवल्स, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब मान लो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो यहाँ से मान लो कि इसको हम ऐसे दे देते हैं, कुछ नेमिंग करते हैं A2। so from here let it be A, this will be B, and this is C, and here it is D. Clear. So here we have given the naming of all these things. Clear. So finally A to B distance is h, and it takes how much time to cover this distance h, it takes t1 time. Similarly B to C, the distance or height is h, and it takes t2 time, and C to D, it takes how much time, t3 time. Clear. So these are the time intervals. What is the ratio of these time intervals, it is asking. Clear. So first of all, what we'll do, what we can do, we can use which kind of equation। तो यहाँ पे टाइम हमें निकालना है, दिया गया है कितना नीचे जा रहा है, डेप्थ कितना डेप्थ नीचे जा रहा है, तो h नीचे जा रहा है। क्लियर। तो g तो यहाँ पे ऑब्वियसली रहेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस इज ए फ्री फॉल मोशन अगर है, सो दिस इज टेकन एज द रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस ले जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ से नीचे की तरफ हर एक मोशन को पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। नीचे की तरफ जो भी जा रहा होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। तो पहला वाला केस में जब A टू B, मोशन फ्रॉम A टू B, मोशन फ्रॉम A टू B। क्लियर। अच्छा, इसमें हम एक काम करेंगे, कुछ और एक नेमिंग हमें देना पड़ेगा। एक नेमिंग मतलब अब मान लो कि यहाँ पे टाइम है 0 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम है t प्राइम, यहाँ पे टाइम है t डबल प्राइम, और यहाँ पे जब पहुँचेगा तो उसका टाइम होगा t ट्रिपल प्राइम। क्लियर। तो मोशन फ्रॉम A टू B, तो मोशन फ्रॉम A टू B जब हम लेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h इज इक्वल टू यू टी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 0, h इज इक्वल टू यू टी प्राइम प्लस हाफ जी टी प्राइम स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा बिकॉज फॉर ऑल u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। क्लियर। तो फाइनली ये कितना होगा, तो h कितना होगा, h विल बी इक्वल टू h will be half gt prime square, so it will be half of gt prime square. Clear.
सो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो टी प्राइम का वैल्यू कितना होगा, टी प्राइम विल बी इक्वल टू 2h अपॉन जी अंडर रूट 2h अपॉन जी डायरेक्टली। तो ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया। क्लियर। सिमिलरली what is the value of t double prime? T double prime, that means it is the time taken by the object to move from A to C. So motion from A to C, तो उस वाले पर्टिकुलर केस में अगर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है, 2h विल बी इक्वल टू यू टी डबल प्राइम प्लस हाफ जी टी डबल प्राइम स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इसमें टी डबल प्राइम का वैल्यू कितना आएगा, टू इंटू टू एच डिवाइडेड बाई जी का रूट, so that means 4h अपॉन जी, सो अंडर रूट 4h अपॉन जी। सो टी प्राइम का वैल्यू हमें मिल रहा है कितना, अंडर रूट 2h अपॉन जी, और टी डबल प्राइम का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, 4h अपॉन जी अंडर रूट 4h अपॉन जी, ये मिल रहा है। क्लियर। सिमिलरली इस वाले पर्टिकुलर केस में मोशन फ्रॉम ए टू डी अगर हम लेंगे तो इस वाले पर्टिकुलर केस में इक्वेशन क्या होगा, 3h विल बी इक्वल टू यू टी ट्रिपल प्राइम प्लस हाफ जी टी ट्रिपल प्राइम स्क्वायर। Clear. So this particular term becomes 0 because initial velocity is 0. So finally what we can write, t triple prime will be equal to 2 3 is 6, so 6h upon g under root 6 upon g, this will be the value of t triple prime. Clear. So right now here if you look at the figure, what is t1 here, what is t1 is the difference between t prime and 0. Clear. What is t2? T2 is the difference between t double prime minus t. So here in this particular case t1 equal to t prime minus 0. Clear. t2 will be equal to what, t double prime minus t prime, and t3 will be equal to what, t triple prime minus t double prime. So that values we will calculate here. Clear. So what is t1 is equal to t prime, so t1 equal to t prime, and the value of t prime is what, t prime is 2h by g, so that we can write simply 2h by g. The value of t double prime, the value of t2 is what, t2 can be written as t double prime is 4h by g minus t prime is how much, 2h by g. Clear. So how much will be getting, so here it will be how much, so it will be 2h by g, we take it common, so it will be root 2 minus 1. Clear. So this will be the value of t2, and similarly the value of t3 will be equal to t triple prime. T triple prime is this one, 6h, so under root 6h by g minus the value of t double prime is 4h under root 4h by g. Clear. So it will be how much, it will be, if we take under root 2h by g common, so it will be root 3 minus root 2. Clear. So that will be the value of t3. So right now what it is asking, what is the ratio of t1 is to t2 is to t3. If we take the ratio of t1 is to t2 is to t3, so it will be how much, तो सभी में रूट 2h by g कट जाएगा, so it will be 1 is to root 2 minus 1 is to root 3 minus root 2. So this will be the answer. So we'll check which one is correct. So 1 root 2 ये नहीं होगा, root 2 minus 1 root 3 minus root 2, so option D will be the correct. Okay, so here in question number 76, what we'll do, a stone is dropped from the top of a tall cliff, and n seconds later another stone is thrown vertically downward with a velocity of u. Okay,
suppose a tall cliff is there, a cliff. Suppose uh, suppose a tower is there, and we'll take some points, and from here, from the top of the tower, a stone is dropped. Suppose a stone, let us consider this is the first stone, clear, which is dropped. That means it is having initial velocity u0, clear. N seconds later, another stone is thrown vertically downward with a velocity of u. N seconds later, that means after some time, another stone which is thrown vertically downward with speed u. U speed से इसको नीचे छोड़ा जा रहा है, clear. Okay, so here it is thrown at time t equal to 0, and this one is thrown after time n second के बाद इसको छोड़ा जा रहा है, clear. Then the second stone overtakes the first below the top of the cliff at a distance, clear. That means ये दोनों अभी क्या, that means what actually will happen, इसको u स्पीड से नीचे की तरफ भेजा जा रहा है और इसको फ्री फॉल किया जा रहा है, क्लियर. तो फाइनली क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें क्या होगा, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 15 सेकेंड 20 सेकेंड कुछ भी हो सकता है. तो उस टाइम में क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस जो कवर्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो सेम होगा, क्लियर. तभी तो जाके वहाँ पे सेकेंड बॉल जो है, सेकेंड विल ओवरटेक द रेड वन, विल ओवरटेक द ग्रीन वन, क्लियर. सो आफ्टर टी टाइम that means initially the situation will be like this. Initially ये बॉल यहाँ पे है, clear, and the red color ball will be somewhere else over here. मान लो कि रेड कलर बॉल यहाँ पे है. ग्रेजुअली ऐसे क्या होगा, ग्रेजुअली what will happen, after some time this green color ball will be over here, and the red color ball, let us assume the red color ball gradually, as it is projected with some speed, so its speed will be more as compared to the green one, clear. और एक ऐसा टाइम आएगा वो वहाँ पे क्या होगा, there will be a time at which the distance covered by both the balls will be same. दोनों same डेप्थ पर रहेंगे, clear. And let us assume here in this particular case, let us assume the time and distance covered for both the cases will be same, clear. So taking the so right now what we'll do, we'll we'll write the equations for same distance. That means both the ball will cover same distance, both the ball will meet at a distance of h below the top of the cliff, clear. Both the balls will meet at a distance of h below the top of the cliff, clear, at time t टाइम पर ये दोनों मीट करेंगे, क्लियर. So what will be the distance covered by the green one? H, H for here you can say first ball के लिए यहाँ पे u0 है, and a will be taken as g, downward motion reference point हम इसको लेंगे. So this will be the reference, तो रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ मोशन को हम पॉजिटिव लेंगे. And so here in this particular case, so after time t, what will be the value of h? H will be equal to ut plus half gt square. So h will be equal to how much? So u is 0 for the first ball, so it will be half gt square. This is for green color ball, clear, or the first ball. Similarly for the second ball, second ball के लिए यहाँ पे क्या है, u is taken as u, a will be g, and after t time what will be the value of h, clear. So h will be equal to how much, u, अच्छा
t time. Okay, here one thing we must remember, that this second ball, which is the red one, it is thrown after how much time? Means it will means for how much time it will cover the same distance? It will travel for the time interval of t minus n टाइम तक, क्लियर, ये ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है ये इसको हम n सेकंड के बाद इसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्लियर। तो कितना टाइम तक ये ट्रैवल करेगा? t माइनस एन तक। सो h विल बी इक्वल टू u इंटू टी माइनस एन प्लस हाफ g इंटू टी माइनस एन स्क्वायर। So that value will be ut minus un plus half gt square plus half gn square माइनस, इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा? 2tn माइनस 2tn इंटू जी बाई टू। सो इट विल बी g by 2 into 2tn, clear, 2 got cancelled. So finally how much will be getting? So h is coming out to be so it is gtn, so ut minus gtn plus half gt square plus half gn square और कोई term, okay, here un is also there minus un, clear. So ये हमें second ball के लिए equation मिला, clear, we are getting the equation for second ball, clear. So right now what we can we can equate these two, because h of the first ball is same as h of the second ball, तो ये दोनों सेम होगा। that means what you can write, we can write over here what you can write. So half gt square will be equal to ut minus gtn plus half gt square plus half gn square minus un. So half gt square will get cancel. So finally what we'll be getting, here, if we take ut and gtn to the left side, so it will be it can be written as, or you can take un minus half gn square will be equal to ut minus gtn, or we can write u minus gn whole into t equal to how much? This one will be u minus gn by 2 into n, taking n and t common from both sides, clear. So the value of t will be equal to how much we'll be getting? So n into u minus gn by 2 all divided by u minus gn. So this is the value of t we are getting, clear. If this is the value of t we are getting, then we want to find out the value of h, clear. यहाँ पे यही पूछा गया है, that means it is asking, and then second stop vortex the first below the top of the clip by at a distance given by, कितना distance नीचे ये overtake करेगा। तो इसी distance h के बाद h डेप्थ नीचे, यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस कवर सेम है, तो h के बाद ही वो लोग सेकेंड रेड कलर बॉल विल बी ओवरटेकिंग द फर्स्ट। So h will be how much? So h will be equal to half gt square। आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, और else you can use this first equation, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। So it will be half, or it will be g by 2 into t square, how much will be getting? n into u minus gn by 2 all divided by u minus gn whole square. So this is the case. So we'll check u in here, it is g into n into u minus gn by 2, n into u minus gn by 2, n into u minus gn by 2, yeah, here u divided by gn, here u minus gn by 2, n into u minus this is u by 2, not u by 2 नहीं होगा, u minus gn ये भी नहीं होगा, gn by 2 होना चाहिए। So option A is the correct।
Okay, here in question number 77, what it is saying is that a motorcycle and a car start from rest from the same place at the same time and travel in the same direction. So there is a motorcycle and there is a car here. Both starts from rest from the same place at the same time. दोनों t इक्वल टू 0 सेकेंड पर स्टार्ट करें एंड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन. क्लियर, सेम डायरेक्शन में ये दोनों ट्रैवल करें, ये भी और ये भी. क्लियर. द मोटरसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. तो इसका तो इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है. सो मोटरसाइकिल इसका भी इनिशियल वेलोसिटी, कार का भी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है. क्लियर. सो द मोटरसाइकिल एक्सेलरेट्स विथ द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. तो मोटरसाइकिल मान लो कि यहाँ पे 36, उसका स्पीड यहाँ पे हो जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर. तो 36 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 36 इंटू 5/18, so it will be 2, so it will be 10 मीटर पर सेकेंड. So that means the motorcycle will accelerate till the speed becomes 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड तक वो एक्सेलरेट होगा. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a इक्वल टू 1 एंड द कार एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कार विल एक्सेलरेट विथ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कार का कितना होगा 0.5 अप टू ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. अप टू ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. 54 कहीं पे भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे शायद कोई नहीं, कुछ नहीं बोला है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करें, लेट इट बी 54. क्लियर. 54 किलोमीटर पर आवर. तो इफ वी टेक 54 इन 5/18, it will be 15 मीटर पर सेकेंड. सो इट विल बी हाउ मच 15 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. 15 मीटर पर सेकेंड के मैक्सिमम स्पीड तक यहाँ पे कार यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेट होगा. द टाइम एट विच द कार वुड ओवरटेक द मोटरसाइकिल इज. कितना टाइम के बाद कार यहाँ पे मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेगा. इससे पहले वाले क्वेश्चन जो था उसमें कितना डिस्टेंस के बाद ओवरटेक करेगा, तो यहाँ पे कितना टाइम के बाद ओवरटेक करेगा. तो मान लो कि जो मोशन यहाँ पे शुरू हो रहा है तो टाइम यहाँ पे 0 है. क्लियर. ओवरटेक करेगा तो कुछ टी टाइम के बाद तो ओवरटेक करेगा ना. मान लो कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसे ऐसे मूव करें, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं कि एक्सेलरेशन होने के दौरान ही ओवरटेक करेगा. क्लियर. तो चेक कर लेते हैं. तो कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करेगा, यहाँ पे ओवरटेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में ये इसको कितना टाइम लगेगा 36 या 10 मीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम स्पीड पकड़ने के लिए मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल. लाइक इन द केस ऑफ मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे u 0 है, a यहाँ पे कितना है 1, v इज 10, देन v इक्वल टू u प्लस 80. क्लियर. v का वैल्यू कितना आ रहा है u प्लस 80. सो 10 इक्वल टू 0 प्लस a इज 1 इंटू टी. तो t का वैल्यू कितना आ रहा है 10 सेकेंड्स. दैट मीन्स 10 सेकेंड्स में ये अचीव कर लेगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड. क्लियर. ऑब्वियस केस. देन उसके बाद यहाँ पे उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कार का केस. क्लियर. कार यहाँ पे फॉर द केस ऑफ कार. क्लियर. कार को कितना टाइम लगेगा ये स्पीड मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के लिए. क्लियर. तो कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इज 0.5, फाइनल वेलोसिटी इज 15. So then v equal to u plus 80. So 15 equal to 0 plus 0.5 into t. So t का वैल्यू कितना आएगा 15 upon 0.5. So how much it will be coming? So 150 upon 5. So it will be 30 seconds. Clear? So 30 seconds. Clear? अच्छा, इसको थोड़ा बहुत हम तो 30 सेकेंड्स, इसको कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड्स में ये इतना स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड पकड़ लेगा. क्लियर. अच्छा, 10 सेकेंड्स में तो फिर ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. क्लियर. ये भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी एस विल बी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एल स्क्वायर. यूटी विल बी 0. सो हाफ
into a each 1 into 10 का square, that is 100, so it will be coming out to be 50. so distance covered is 50 meter. क्लियर. और ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा मोटरसाइकिल और यहाँ पे कार का केस में, तो इट विल बी सेम हाफ इंटू ए इज 0.5 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 900. क्लियर. सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच. सो इट इज 90 by 2, that is 45 into 5, 45 into 5, 45 into 5, 225, 225. so distance covered is 225 meter. clear. ओके. सो 30 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लेगा, यहाँ पे 225 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है. क्लियर. अच्छा, मतलब 225 मीटर डिस्टेंस कवर करके ये इतना मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे अचीव कर लेगा. अच्छा, तो फिर ये मोटरसाइकिल का केस अगर हम लेंगे, अब मान लो कि मोटरसाइकिल का केस थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा. 10 सेकेंड में मान लो कि ये 50 मीटर कवर कर रहा है. क्लियर. तो 30 सेकेंड में कितना कवर करेगा. क्लियर. तो ये तो थोड़ा चेक कर लेंगे 30 सेकेंड में. क्लियर. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, 10 सेकेंड के बाद यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि 10 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके बाद उसका क्या होगा, उसके बाद वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा. क्लियर. विद दैट पर्टिकुलर स्पीड उसके बाद क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा. क्लियर. तो उसके बाद अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड एस विल बी इक्वल टू हाउ मच, सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम. क्लियर. तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, 10. सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज 10 एंड इन रेस्ट हाउ व्हाट 20 सेकेंड्स. क्लियर. इन रेस्ट 20 सेकेंड, यहाँ पे 30 सेकेंड के लिए इसका डिस्टेंस कवर कार के लिए, कार का तो हम लोग कैलकुलेट कर चाहिए, तो रेस्ट 20 सेकेंड्स. इसका मोटरसाइकिल का कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, 10 सेकेंड के लिए तो 50 हो रहा है, तो रेस्ट 20 सेकेंड में कितना होगा, सो इट विल बी 200 मीटर. क्लियर. सो एस कितना आ रहा है, 200 मीटर. एस मान लो कि इसको S1 ले देते हैं. क्लियर. तो S1 इज द डिस्टेंस कवर्ड in next 20 seconds with uniform speed. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 30 सेकेंड्स में. टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा मोटरसाइकिल के लिए, मोटरसाइकिल का टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा दिस 50 + 200, सो इट विल बी हाउ मच, 250 मीटर. क्लियर. ये कितना हो जाएगा 250 मीटर. तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है इसको करने का लॉजिक क्या है. क्लियर. इसमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. क्लियर. इसमें लॉजिक ये है कि अगर हम देखेंगे इस वाले केस में, अब मान लो कि 10 सेकंड में तो ये 50 मीटर जा रहा था, 10 सेकंड में इसको हम मान लो कि 10 सेकंड में यहाँ तक आ रहा था, 10 सेकेंड्स में ये मान लो कि 50 मीटर, तो 30 सेकेंड्स के टाइम में ये कार, इसको मैं थोड़ा दोबारा बना लेता हूँ फिगर. सो मोटरसाइकिल और ये कार. क्लियर. मोटरसाइकिल 10 सेकेंड में यहाँ पे कितना मीटर कवर कर ले रहा है, 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो 30 सेकेंड्स में टोटल कितना हो जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो इट विल बी 250 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है. तो अगर कार का केस लेंगे, कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 225 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 30 सेकेंड्स. तो ये वाला केस है. तो कार यहाँ पे पीछे है मोटरसाइकिल के. लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, द टाइम एट विच कार वुड ओवरटेक द मोटरसाइकिल. कितना टाइम के बाद कार यहाँ पे मोटरसाइकिल, तो आहिस्ता आहिस्ता कार क्या होगा, कार ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो अभी उसका स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मोटरसाइकिल, दैट मीन्स ग्रेजुअली इट विल आफ्टर सम टाइम इट विल ओवरटेक. क्लियर. कुछ समय के बाद ये क्या होगा, कार यहाँ पे मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर लेगा. तो ये होए वो पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा. ओवरटेक होगा मतलब क्या, उसी टाइम पे, उसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे. क्लियर.
अच्छा, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे तो इस केस में हमें एक लॉजिक लेना है। क्लियर? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटरसाइकिल। क्लियर? तो इस केस में डिस्टेंस, इसको मैं ये वाला पार्ट को थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा आसानी से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। ओके, है, जगह है। क्लियर? सो हियर व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट distance covered by motorcycle, and that value will be, let the distance covered by motorcycle be x m, and that value will be how much. So initially for a motorcycle, distance covered on the motorcycle in टाइम t टाइम के लिए। क्लियर? टी टाइम, क्योंकि टी टाइम में ही ये दोनों मीट करेंगे। सो इट विल बी x इज इक्वल टू यू टी, you can write u into t minus 10. Okay, here in this particular case, just wait, we will not write it directly. Initially what actually happening is that this motorcycle is accelerating for 10 seconds, and after that it will move uniformly for t minus 10 seconds. Clear? इन टी टाइम में जब हम इसको लिखेंगे तो हमें यहाँ पे लॉजिक क्या लेना है, इनिशियली द मोटरसाइकिल will accelerate for 10 seconds, and after that it will move with uniform speed for t minus 10 seconds. क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट या फिर जो डिस्टेंस कवर्ड फॉर द मोटरसाइकिल, दैट विल बी हाउ मच, इट विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर? तो u कितना है, 0 है, तो दिस पर्टिकुलर टर्म विल बिकम 0. क्लियर? इनिशियली मोटरसाइकिल इज एट रेस्ट, तो यहाँ पे ये वाला केस में आप देख सकते हो मोटरसाइकिल u 0 लिया गया। सो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 1 इंटू टी, पहले 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे, सो टी का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर, प्लस वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज 10 आफ्टर 10 सेकेंड, एंड यहाँ पे टी माइनस 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे टी माइनस 10 होगा, v इंटू टी माइनस 10 दैट वी हैव टू टेक। क्लियर? तो x का वैल्यू यहाँ पे इतना आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं, इट विल बी कमिंग टू 50 प्लस 10 t माइनस 100, सो x इज कमिंग आउट टू बी 10 t माइनस 50। सो x का वैल्यू यहाँ पे हमें कितना मिला, 10 t माइनस 50। ये पहला इक्वेशन, दिस इज फॉर मोटरसाइकिल। Okay, let me take another page. Okay, and similarly here in this particular case, if we take the case of car, similarly the car will accelerate for 30 seconds first, and after that it will move uniformly. After that it will move uniformly with its maximum speed for t minus 30 seconds. क्लियर? t माइनस 30 सेकेंड्स के लिए ये यूनिफॉर्मली मूव करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, एक्स प्राइम विल बी इक्वल टू, पहले 30 सेकेंड्स के लिए इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो x विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें पहले यूज़ करना है। फिर उसके बाद क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें वी टी यूज करना है। सो यू टी यू इसके लिए भी जीरो है, सो तो ये वाला टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हाफ एक्सेलरेशन कार का कितना है 0.5 और कितना सेकंड्स के लिए 30 सेकंड्स के लिए हो रहा है एक्सेलरेशन, तो 30 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आ रहा था 54, जो कि 15 इंटू कितना टाइम के लिए t माइनस 30 टाइम के लिए। सो नेट डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाउ मच, ये कितना आ रहा था 3900, सो ये 225 प्लस 15t माइनस 450, तो ये वैल्यू हमें कितना मिलेगा, दैट वैल्यू विल बी 15t माइनस माइनस यहाँ पे 450 माइनस 225 225 225 400 450, सो इट्स सेम 225। दैट मीन्स एक्स प्राइम कितना आ रहा है 15t माइनस 225। So here in this particular case, in t time, the equation for motorcycle in t time will be 10t minus 50, and the motorcycle will cover x distance in t time, and the equation for car is coming out to be 15t minus 225, and these two are same. Here x is equal to x prime, clear, x का वैल्यू यहाँ पे x प्राइम के साथ इक्वल है, and x का वैल्यू कितना है 10t minus 50, so 10t minus 50 equal to 15t minus 225. So finally how much we'll be getting, so we'll be getting 5t equal to 220 minus 225 minus 50, 225 50, so 175. So the value of t will be how much, 175 upon 5, so it will be coming out to be how much, 5 3 is 15, 5 to 15, 5 5 जा 25, 15 तो 2 रहेगा तो 25 35, टाइम कितना आएगा 30 सेकेंड। सो दैट मीन्स आफ्टर 30 सेकेंड्स द कार विल ओवरटेक, आफ्टर 30 not 30, after 35 seconds, after 35 seconds the car will overtake the motorcycle, so option D will be the correct one, 35 seconds, clear? Okay, we need to actually this takes so much time because we need to understand the concept, that's why I have taken so much time, or else it could be written in a shortcut form. Okay, moving to the next question. Okay, in question number 78, what it is saying, a body initially at rest is moving with a uniform acceleration. Initially at rest means u equal to 0, acceleration is a, and its velocity after n seconds is v, so time is n, and final velocity is v, that means the equation for it is we can use the uniformly accelerated motion equation, so v is equal to u plus at, v equal to u is 0 plus a into n, that implies v we are getting a n. This is one equation, clear? And what it is saying, the displacement of the body in last 2 seconds, that means suppose here in this particular case, if the object starts its motion from a, initially its velocity is 0, it is accelerating with a, and at n seconds it takes n seconds to reach at b, it takes n second to reach at b, b को पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है n seconds, and n और वहाँ पे पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो रहा है v at n seconds में, क्लियर? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड में कितना होगा, लास्ट 2 सेकंड मतलब ये n माइनस 2 सेकेंड होगा, n माइनस 2 टू n, ये जो टाइम इंटरवल कितना है, दिस इज टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स, और ये 2 सेकेंड्स का जो टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें निकालना है, क्लियर? सो ये डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, क्लियर? सो डायरेक्टली सिंपली डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, सो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स कितना होगा sn, so this is what, this is sn, and this particular value is what, sn minus 2, क्लियर? तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमें देगा s, so s will be equal to sn minus sn minus 2, so displacement, so s is what, sn minus
Sn can be written as ut plus half at square un. So it will be u into n plus half a n square माइनस एस एन माइनस टू का वैल्यू कितना होगा u इंटू एन माइनस टू टाइम यहाँ पे n माइनस टू लेना है प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये वाला केस हमें लेना है। सो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा तो इट विल बी यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस हाउ मच इट इज कमिंग यू एन माइनस ओके यहाँ पे और कुछ बोला गया। अच्छा अच्छा ये वाला यू तो क्यों लेंगे भाई ये तो यू तो यहाँ पे इनिशियल एट रेस्ट है ना तो इनिशियल एट रेस्ट दैट मीन्स यू पार्ट दिस टर्म विल बिकम जीरो सो इस जीरो दिस टर्म बिकम्स जीरो। सो इसको हमें लिखने का कोई जरूरत है नो नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर वन। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर। क्लियर। तो ये ठीक है हाँ ठीक है। So it is coming out to be half a n square minus half of a into n square plus 4 minus 4n इतना आ रहा है कि नहीं। तो फाइनली इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना आएगा हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस टू यहाँ पे कट जाएगा तो ये कितना होगा टू ए एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ ए इंटू फोर एन सो इट विल बी टू ए एन। तो ये दोनों कट जा रहा है तो फाइनली वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है मुझे ए टू ए हम ले जाएंगे कॉमन तो फाइनली कितना होगा एन टू एन कॉमन ले लो तो कितना आएगा टू एन को अगर कॉमन लेंगे तो वन माइनस एन कितना आ रहा है वन माइनस एन। अच्छा तो यहाँ पे हमें चेक करना है भी अच्छा कितना आ रहा है ओके यहाँ पे चेक करेंगे। अच्छा ये वाला केस थोड़ा फिर से दोबारा हम चेक कर लेंगे कहीं पे गलती हुआ है क्या। ओके डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड तो एस एन माइनस एस एन माइनस टू ओके दैट इज करेक्ट। सो yes correct okay let's so finally here in this particular case in all the equations there is no term of a so that means from here what we'll be getting the value of a equal to v by n। so putting that value over here what we'll be getting 2 into v by n into n into 1 minus n। अच्छा तो n to v ओके यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं पे गड़बड़ी हुआ है थोड़ा चेक करते हैं। ओके सो यहाँ पे गलती थोड़ा तो फिर से चेक कर लेते हैं ये वाला पार्ट यहाँ पे कहीं पे गलती हुआ होगा यहाँ पे इसको थोड़ा ओके तो मल्टीप्लिकेशन पार्ट हाफ ए एन स्क्वायर ओके माइनस ए बाई टू इंटू फोर। अच्छा यहाँ पे एन स्क्वायर कहाँ पे आएगा ये एन स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा ये कितना होगा माइनस टू ए plus 2n okay this one right now it is correct। okay so finally what we will be getting these two got cancelled so we can take common 2a if we take 2a common then it will be n minus 1 so this particular term so from here what will write so s will be equal to if we take 2a common so it will be n minus 1 okay। so but the value of a okay what we can write value of a is v by n so 2 into v by n into n minus 1। so displacement in last 2 seconds will be coming out to be 2v by n into n minus 1 2v by n into n minus 1 so option a is the correct one। okay moving to question number 79 question number 79। so here in question number 79
So what it's saying, a body starts from body A starts from rest with an acceleration a1. Okay, there is a object with A which starts from rest, initial velocity is 0 and time is also 0. With an acceleration it starts from rest and it is having acceleration is a1. After 2 seconds another body B starts from rest with an acceleration a2. Clear? If they travel, there is another body B, starts from, it also starts from rest, it also initial velocity is 0 and time is 0. Clear? And it moves with acceleration a2. If they travel equal distance and in fifth second, equal distances in fifth second after the start of A, then ratio of a1 is to a2 is equal to. So here in this particular case, what we can do, so logic we need to find out. For the body A which is having acceleration a, okay, so here one thing they are saying is that they travel equal distances in fifth second. This fifth second indicates what? It is the displacement. It indicates displacement within the time interval, of 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड. ये इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंसेस इन फिफ्थ सेकेंड. क्लियर? अच्छा, तो लास्ट टाइम कौन सा लिया गया? 5 सेकेंड. लास्ट टाइम कौन सा है? 5 सेकेंड. मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ये इसका टाइम स्टार्ट हो गया 0 पे उसको भेज दिया गया. क्लियर? 0 पे उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 एंड 0 पे ही उसका मोशन शुरू हो रहा है. क्लियर? और ये कितना टाइम तक मूव कर रहा है? मान लो कि ये इसका जो लास्ट टाइम है वो है 5 सेकेंड. क्लियर? तो 5 सेकेंड से पहले, 5 सेकेंड पहुंचने से पहले जो 4 सेकेंड जब टाइम होगा, तो 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी ए के लिए वो कितना होगा? एस फिफ्थ. उसको हम बोलेंगे एस फिफ्थ. क्लियर? और उसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं. क्लियर? अच्छा, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ बोला गया है कि 2 सेकेंड के बाद बॉडी बी स्टार्ट हो रहा है, तो और वो भी फिफ्थ सेकेंड पर दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है. मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस में जब 0 हुआ तो ए का मोशन तो शुरू हो गया बट बी रेस्ट में है. 1 सेकेंड हो गया, बी रेस्ट में है, ए मूव कर रहा है. 2 सेकेंड हुआ तो ये टाइम जब 2 सेकेंड होगा तो उस समय बी का मोशन शुरू होगा. क्लियर? तो 2 सेकेंड होगा जब बी का मोशन शुरू होगा और उसका एक्सेलरेशन अगर मान लो कि a2 हुआ, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लास्ट सेकेंड में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है. तो 2 सेकेंड और 2 सेकेंड से इसका मोशन शुरू हुआ है, तो ये कितना 5 सेकेंड तक इसे मूव करना है. क्लियर? 5 सेकेंड तक मूव करना है, तो लास्ट 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल वही हमें चेक करना है. क्लियर? तो इसमें इस वाले पर्टिकुलर केस में ये तो 2 सेकेंड के बाद इसका मोशन शुरू हो रहा है, लेकिन हमें कंसीडर क्या करना है? कंसीडर यही करना है कि मोशन तो 2 सेकेंड के बाद शुरू नहीं होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए. तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो मोशन हमेशा 0 सेकेंड से ही शुरू होगा. क्लियर? तो अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम इससे, तो 4 - 2 और यहाँ पे 5 - 2 अगर करेंगे तो ये कितना होगा? 2 सेकेंड. ये कितना होगा? 2 सेकेंड. और ये कितना होगा? 3 सेकेंड. क्लियर? तो दैट मीन्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इन द फिफ्थ सेकेंड ऑफ बॉडी ए विल बी सेम एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड सेकेंड ऑफ बॉडी बी. ये दोनों सेम होगा तभी. क्लियर? क्योंकि बी का मोशन 2 सेकेंड के बाद शुरू हो रहा है. क्लियर? तो इस चीज़ को अभी हमें यहाँ पे लॉजिकली ना है. तो बॉडी A and body B. So what we can write? Displacement in fifth second of body A will be same as displacement in third second of body B. So displacement in fifth second of body A, इसका फॉर्मूला क्या होगा?
तो एस एन एथ का फॉर्मूला जो है उसी को हमें यूज़ करना है। सो एस एन एथ का फॉर्मूला क्या है, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, और इसमें दोनों के केस में तो यू जीरो है, क्लियर। तो सिंपली हमें यूज करना है ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, क्लियर। सो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो फिफ्थ के लिए क्या होगा, तो इसको हमें लिखना है यहाँ पे। सो सिंपली ए वन बाई टू इंटू टू इंटू फाइव माइनस वन, दैट विल बी इक्वल टू ए टू बाई टू। ए टू यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी बी लिया गया है, क्लियर, और ये बॉडी ए है, ए का एक्सीलरेशन ए वन है, बी का एक्सीलरेशन ए टू है। सो ए टू बाई टू इंटू इसका थर्ड लेना है तो थ्री माइनस वन, क्लियर। सो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो टू फाइव जो टेन माइनस वन नाइन, नाइन ए वन बाई टू इक्वल टू सिक्स माइनस वन, दैट इज फाइव ए टू बाई टू। सो टू टू गेट कैंसिल, सो रेशियो यहाँ पे कितना आएगा, ए वन अपॉन ए टू विल बी इक्वल टू 5:9। तो ये हमें रेशियो यहाँ पे मिलेगा, क्लियर। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ए वन इज टू एच टू पूछा गया, तो 5:9, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, क्लियर। Next, moving to question number 80. Okay, here in this particular case, what it is saying, a bullet fired into a wooden block loses half of its velocity after penetrating 40 centimeter. Clear? It comes to rest after penetrating a further distance of. Okay, so here in question number 80, what it is saying is that a bullet fired into a wooden block loses half of its velocity after penetrating 40 centimeter. It comes to rest after penetrating a further distance of. Okay, initially what it is saying, bullet fired into a wooden block loses half of its velocity after penetrating 40 centimeter. That means suppose this is a wooden block, big wooden block, and there is a bullet. Suppose this is a bullet which is having initial velocity v, and loses half of its velocity after penetrating 40 centimeter. That means यहाँ से पेनिट्रेशन यहाँ से शुरू होगा, ये वाला पॉइंट से, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर मान लो कि यहाँ पे फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 40 सेंटीमीटर एज्यूम। तो that means while penetrating at this particular point, here velocity will be v, and at this particular point the velocity will be how much, v by 2, clear. So distance covered is 40 centimeter, clear. So here in this particular case, then what will be the further distance, it comes to rest after penetrating a further distance of. तो फाइनली ये रेस्ट में आएगा, तो रेस्ट में मान लो कि यहाँ पे रेस्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर रेस्ट में आ रहा है तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, क्लियर। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल डू, द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करने का जो पहला पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी कितना आ रहा है, v बाई टू। एक्सीलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आएगा जो कि रिटार्डेशन के फॉर्मेट में हमें लेना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज 40 सेंटीमीटर, क्लियर। ओके, डिस्प्लेसमेंट इफ इट इज 40 सेंटीमीटर, देन वी कैन यूज द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a s, एंड a शुड बी नेगेटिव ओवर हियर, a यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, -2s, क्लियर। So finally here in this particular case v is how much, v is v square by 4 minus u is how much, v square equal to how much, it is coming -2as. So the value of s is coming out to be how much, value of s, so how much it will be, take LCM 4, so 1 minus so how much, it is 1 minus 4 into v square is equal to -2as. So finally this particular value will be
-3v² / 4 is equal to -2as. So negative negative got cancelled. So finally displacement is given 40 centimeter. Clear? So we can put that value. So finally acceleration will be how much? We can find out the acceleration. A is coming out to be 3v² / 8s. 3v² / 8s. Clear? So A is coming out to be 3v² / 8 into S is 40. Clear? So S is coming out, S is given, which is 40. So here in this particular case we will not convert this one. So let us take a general equation. No need to find out all the values in detail, so we will not write it like this. So let us take this general equation. So how much will we be getting over here? So 3v² / 4 equal to 2as. Okay, this is first equation. Similarly second part of penetration. Clear? Second part of penetration. Clear? We'll take the second part of penetration. तो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है? सेकेंड पार्ट में उसका फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज v/2 एंड एक्सेलरेशन इज सेम a. क्लियर? Then v² - u² equal to 2s. So v² - u² equal to 2as. डिस्प्लेसमेंट उसका मान लो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे s प्राइम, और s प्राइम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. So v² is this part becomes 0 because final velocity is 0. So -v²/4 equal to 2. एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्लियर? तभी तो जाके फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. तो -a into s प्राइम. So finally how much will be getting? So we'll be getting v² / 4 equal to 2as prime. Clear? This is equation number 2. So from 1 and 2. So from 1 and 2, what we can say is that 3v² / 4 is equal to 2as. This is from 1, but v² / 4 is equal to 2as prime. So 3 into 2as prime. From equation 2 we are getting 2s prime is equal to 2as. Clear? So 6as prime is equal to 2as. तो 2a और यहाँ पे कितना होगा? 3. So finally what will be getting? S prime is equal to s/3. and what is the value of s? S का वैल्यू कितना है यहाँ पे? S is 40. So 40/3 centimeter. Clear? So the final answer will be 40/3 centimeter. So option 40/3 centimeter, option B will be the correct. Moving to question number 81. What it is saying? A body moving with some initial velocity having uniform acceleration attains a final velocity v meter per second after traveling x meter. Okay, its final velocity यहाँ पे इतना दिया गया है. Find the acceleration of the body. तो acceleration यहाँ पे पूछा गया है. तो यहाँ पे बोला गया है मूविंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट गिवन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन. फाइनल वेलोसिटी जस्ट लिखा गया कि v और एंड दैट v इज अटेंड आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस x. तो vx के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमें दिया गया है. v इज इक्वल टू √180 - 7x. ये हमें v का वैल्यू दिया गया है. अच्छा, तो इसमें बाकी और कुछ नहीं दिया गया. तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी. तो इसको हमें क्या करना है? सो लेट अस स्क्वायर ऑन बोथ साइड. सो v² इज इक्वल टू 180 - 7x. सो ये जो ये एक ऐसा फॉर्मेट में दिख रहा है शायद. v² - u² इज इक्वल टू 2as. सो v² - 180 इक्वल टू -2. okay, here in this particular case -180 equal to -7x. So if we compare these two, that means u² equal to 180. तो इससे हमें u का वैल्यू मिलेगा. एंड 2as का वैल्यू कितना है? -7x. दैट मीन्स 2a
x विल बी इक्वल टू -7x, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ये s, यहाँ पे क्या होगा, x को हमें यहाँ पे x लेना है, क्लियर। तो x विल गेट कैंसल्ड आउट, so the value of a will be equal to -7/2, that is -3.5 meter per second square, so -3.5 here option A। तो ये जो केस है इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वी नीड टू कंपेयर विद द ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन के साथ हमें इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, तो उससे हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, क्लियर। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 82। Okay, here in this particular case, what it is saying, two stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 200 meter high with initial speed of 15 meter per second and 30 meter per second respectively, clear। The time variation of relative position of the second stone, okay, thrown ऊपर की तरफ थ्रोन किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 15 और 30 दिया गया है। ओके, रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सेकेंड स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टोन इन फिगर। तो फिगर में यहाँ पे देखा है द इक्वेशन ऑफ लीनियर पार्ट का जो इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया गया है, ऑप्शंस प्रिंट नहीं हुआ है, ओके फाइन। तो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, ओके, सो assume that here in this particular case, this is the top of the cliff, 200-meter high, and two stones, stone number 1 and another stone will be taking stone number 2, clear। This blue color stone is thrown with a speed of 15 meter per second, and this red color stone is thrown with a speed of 30 meter per second। okay, the time of variation of relative position, okay, relative displacement। तो यहाँ पे इन दोनों का केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके फाइन। टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट, सेकंड जो रेड है विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट, दिस इज हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड स्टोन, क्लियर। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट विल बी हाउ मच, ये हमें पूछा गया है, क्लियर। तो इसका इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखना है, क्लियर। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में x2, हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन फॉर x2, so x2 will be equal to x is equal to u2 t2 plus half a2 t2 square, clear। okay, so here in this particular case x2 equal to u2 is 30 t2 plus acceleration due to gravity, and that will be writing as half माइनस जी इंटू t2 स्क्वायर। सो x2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 30 t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट सिमिलरली द वैल्यू ऑफ x1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टोन। सो x1, द वैल्यू ऑफ x1 विल बी x1 is equal to u1 into t1 plus half a1 into t1 square। so the value of u1 is first stone का स्पीड कितना है 15 into t1 plus half a1 का वैल्यू कितना है -g into t1 square। so this particular value x1 will be how much, so 15 t1 minus half g t1 स्क्वायर, क्लियर। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अभी हमें निकालना है, दैट मीन्स x2 माइनस x1। तो ये वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, x2 इज 30 t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर माइनस x1 इज 15 t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट। सो फाइनली इट विल बी 30 t2 minus 15 t1, 30 t2 minus 15 t1
30t2 minus 15t1, and here in this particular case, how much we'll be getting? We'll be getting minus minus plus, so we'll be getting plus half g into t1 minus t2, half g into t1 square minus t2 square. Clear? Okay, this is what we are getting. Okay, here in this particular case, anything it has told us, okay, 200 meter, 15 meter per second, the time variation of the relative position of the second stone with respect to the first stone, टाइम वेरिएशन यहाँ पे देखा है. द इक्वेशन ऑफ लीनियर पार्ट इज, लीनियर पार्ट का जो इक्वेशन होगा वो हमें यहाँ पे पूछ रहा है. तो लीनियर पार्ट का जो इक्वेशन होगा, so here in this particular case, if this is the general equation, we are getting the general equation, that is x2 minus x1 is coming out to be, x2 minus x1 is coming out to be this particular value. Clear? Let me write the equation once again. x2 minus x1 is coming out to be 30t2 minus 15t1 plus half g t1 square minus t2 square. Okay, this is the general equation, but just look at the graph. If you just look at the graph, what it is saying, for a particular time interval, for a particular time. Clear? We need to it is the graph of this relative position of B, stone B, with respect to the first stone at a particular instant of time. Clear? This is the particular, but at any particular instant of time, that means what we can say, at any particular instant of time means t1 equal to t2 equal to t. That means the equation will become x2 minus x1 equal to 30t minus 15t plus half g t square minus t square. So this term becomes 0. So it will be 15t. So x2 minus x1 is 15t. So here in this particular case, the linear part, the equation of the linear part is x2 minus x1 equal to 15t. So the equation for this linear part will be x2 minus x1 equal to 15t. So this will be the final answer. Actually, the options which are given in the question are options which are, you can note it down, the options that are given in the question are, first option is x2 minus x1 equal to 50t. Second option is x2 minus x1 equal to 15t. Not second, it is the third option, C. And the second option is x2 minus x1 equal to 10t. And the last option is x2 minus x1 equal to 20t. So finally, here in this particular case, option C will be the correct. Here x2 minus x1 is equal to 15t.